सर थोड़ा Excuse me, sir.
आज भी जैसे स्पेशल एक्सपर्टीज लेक्चर नहीं है ऑनलाइन किट देती हो ना। हाँ आज है जूम लिंक भेजी थी मैंने 2:30 बजे है 2:30 बजे। अंशु तेरी पेन पेन ये तो हेलो दिखा लगा। हाँ हाँ चलना चला उधर ही साइड भी तो कर लेंगे। हाँ चला चला होर करा ब्लैक होर एक्सक्यूज मी सर अभी आना यार जिन्होंने पहले रजिस्टर किया ऑनलाइन ओडी ऐड कर लेना। अच्छा
अंदर आया कितने रमन है सर्टिफिकेट्स पे नाम अंदर आया कितने रमन है पे टाइम लग रहा है, अंदर इवेंट शुरू होने वाला है। सर्टिफिकेट कार्ड दे देना, इनको आईडी कार्ड यार क्या अपने सर सर्टिफिकेट गिना यार इन्होंने एसडी कॉलेज बरनाला से हैं ये लोग, 4 को आईडी कार्ड मिल चुका है, इन दिनों को नहीं मिला। यार ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਬੈਠੋ ਜਾ ओ कॉल कर दे ਬੈਠੋ ਬੈਠੋ ਕੋਈ ਨਾ ਬਾਅਦ ਚ ਅੰਦਰ ਬਣਵਾ ਲਾਂਗੇ, ਭੇਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬਿਠਾਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ करती बात लाई हुई है ਬੈਠੋ ਹਾਂ कर ले रिकॉर्डिंग खाली डाल दो, खुद नाम डाल दो, क्योंकि ना इवेंट शुरू करना है। तो साइड पे हो ਯਾਰ ਮੈਂ ਚਲੇ ਹੀ ਜਾਂਦਾ और रजिस्टर्ड पार्टिसिपेंट्स को ही किड्स और अटेंडेंस लगवा लो जो बच्चे आ रहे हैं। हेलो गुड मॉर्निंग सर, अंदर बैठे हैं मैम जी। स्कूल के भी बच्चे आ गए हैं, उनका बाद में हेलो कराएंगे, अंदर बैठा रहे हैं। हेलो हाँ हेलो हाँ जी पापा जी फंक्शन थे यूनिवर्सिटी जिनकी रजिस्ट्रेशन है ये इधर आ जाओ। हेलो एक मिनट रुको हेलो बाहर ही अंदर है केड़ा शौक एक मिनट रुको यार, मैं कर एक मिनट रुको। रजिस्ट्रेशन विल ओपन, प्लीज सिट इनसाइड, प्लीज सिट इनसाइड। बिंदिया मैम, डॉक्टर दुआ क्लास लेकर ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਗੈਰਾ ਲੈਣ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚ ਆ ਜਾਓਗੇ, ਉਦੋਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਲਿਓ। ਹਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਚਲੋ ਸਾਰੇ, अभी अंदर चलो सारे। ਤਾਨੀਆ भैया
लाइव जा रहा है वो तो चल रहा है और इनके पेज पे अच्छा तो आप बाहर से हैं या यहीं से यहीं से हम तो ये तो हमने चैनल लाइव के लिए कोई डिवाइस ले जो हमारा चैनल है नहीं डिवाइस डिवाइस ये देखो ना हमने वो नहीं हम भी करते हैं ना हमारे पास ज़्यादा ताम झाम खिलाना पड़ता है बीच में करना पड़ता है राउटर के अंदर वो जो आप हाँ हाँ वो बनाने हमारा वो तो फेसबुक पे चल रहा है यूट्यूब हमारा रिकॉर्डिंग मारते वही क्लोज करते हैं लाइट किया ठीक है थले कर सौ तो थले कर 50 थले जा थले जा बस ते 19 रोटी बस दे बाद में ना कि फिक्स छोड़ देना इसको मैं पैनल छोड़ देना सर साइड हो जा पूरे हाँ हुणे फोन आया है मैनू आहो तो यार ये पता नहीं अरे की हो गया मैं समझ नहीं आई अच्छा मैनू मामे का फोन आया हुणे यार दस्या मेरे मामे का फोन आया हुणे लाइव फोन लाइव कॉन्फ्रेंस ले Hello, mic testing. 1, 2, 3, hello. Hello. I request all the students to kindly get seated and maintain the decorum of the place, and all the members of organizing committee and the teachers to ensure proper discipline as we are just about to start the event. Hello.
I request all the students to kindly get seated. So may I have your permission to start? It was the character that got us out of bed, commitment that moved us into action, and discipline that enabled us to follow through. Good morning all of you. Today I, Sanidhya Sharma, am the host of this event today, and I feel immense honor and pleasure to welcome you all on this auspicious mega event of Science Week Festival 2022, Vigyan Sarvatra Pujyate. This event is supported by Vigyan Prasar under its flagship program scope, Science and Technology Communication, Popularization and its extension, under the support of Ministry of Culture and Office of the Government of India, and by State Nodal Agency, Punjab State Council for Science and Technology. Themed around Azadi ka Amrit Mahotsav, 75 years of independence, 75 programs at 75 different locations have been planned all over India, and Gndu is one of them. I feel delighted to inform you all that in Guru Nanak Dev University, Department of Physics have been assigned this task of successful conducting this event, and I would like to inform our honorable guest of honor, all the teachers present and all the students, that in this week-long festival we have a range of competitions from declamation to story writing to Rangoli competition to whip cure, etc., in which students from various eminent institutions, colleges and school would be given an exposure about the scientific developments worldwide going on in order to develop a more rational scientific thought in the younger generations, in the future shoulders of our nation. I am highly indebted to a worthy guest of honor who have granted us their precious time today and have joined us for the event. It's a moment of great honor and pride for me, as I am myself a civil services aspirant, and for thousands of other aspirants living in the streets of old Rajendra Nagar, in Delhi and all over India. It's a pride for me to introduce to you all our first guest of honor, Mr. Dharamveer sir. Sir, you are a retired Indian Administrative Services officer and you are an alumni, proud alumni of IIT Kharagpur and IIT Kanpur, from where you did your BSc Honours Physics and MSc Physics, respectively. Sir, during your service, you did your MBA from University of Leeds in 1988 under the British Colombo Plan. Sir, I am delighted to inform my audience that you were retired as Chief Secretary in State Government of Haryana, India, after working for 36 years at several positions, including Secretary, Director, MD in Government Public Sector Undertakings, being a Vice-Chancellor of 2 universities and Director of Board of Governors of several educational institutions. Sir, you are also involved in promotion of science and technology, and you have set up a non-for-profit NGO, Society for Promotion of Science and Technology in India, along with a number of eminent scientists, engineers, academicians, and administrators. Sir, you were also appointed as State Election Commissioner for a period of 5 years to supervise and conduct elections to Panchayati Raj institutions and municipal bodies. Sir, I suppose the whole day would be very less to count your qualifications and achievement. So now, without taking much of your time and much of time of our audience, I would request you to kindly come on the stage and address our audience. Thank you for such a introduction, which I hardly deserve. I am as ordinary person as anyone else. Ladies and gentlemen and children, it's a really privilege and pleasure for me to be here on such a momentous occasion. As you know,
the country is celebrating 75th year of the Indian independence, which has come through very hard means, through a lot of sacrifices across the country. And we must pay tributes to those great martyrs, freedom fighters, and endless number of people who lived their life to secure freedom for us to live in. It's really a tribute that we should pay before we start celebrating the Vigyan Sarvatra Pujyate. Science in India has always flourished, right from the ancient times. The monuments like Mohenjo-daro and many other monuments tell us how developed the architecture and civil engineering was. So it's no means that we had excellent system of scientific learning, research and technology, converting the ideas of science into technology. And it is heartening to see that people have begun to realize what India was and what India could contribute to the well-being of the people across the world. And we must be grateful to the Department of Science and Technology, Government of India for taking the initiative, especially Professor Vijay Raghavan, who happened to be a fellow student at IIT Kanpur. And we are very happy to see that he has brought several ideas and converted them into action. While going through the programs that have been grouped in 4 themes, first theme is Annals of History of SNT, which will trace out the historical development of science during last 75 years, describing the work of 75 scientists or asking them to give lectures, and 75 technocrats. And they, for the first time, I'm very happy to see that the Swadeshi Paramparik inventions and innovations have been included in the science and technology arena. As you know, from our own childhood days, how mothers, parents used to give us काढ़ा देते थे, कभी कुछ गर्म पानी का गार्गल हम लोग करते थे. बहुत ऐसी चीज़ें हैं कि जिसको हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे हल्दी है. हल्दी का ही इस्तेमाल हम लोग करते हैं घर में. हल्दी एक बहुत अच्छा कहते हैं कि एंटीबायोटिक है. इसमें कई और प्रॉपर्टीज़ हैं. तो जो हम लोग खाना खाते हैं, जो चीज़ें हम जिस टाइप के हम लोग अपने घर बनाते थे, तो लोकल मटेरियल से बनते थे. और हम लोग की ये बात दूसरी है कि बहुत सारे पैंडेमिक्स वगैरह को वो डील नहीं कर पाए. Still we survived. So they want to bring the best of the ideas and practices in the indigenous system of healthcare into the realm of science and technology and connect with the modern healthcare system as we look at. And it is also, they are also going to look at the achievements that India has made during 75 years of independence. I remember how India was twisted because of the aid which came, PL 480. We used to get the wheat, Mexican wheat from USA. And in 1965, the war with Pakistan brought 2 issues in sharp focus. We could not survive without PL 480.
And Lal Bahadur Shastri said, and we could not induct technology, upgrade our defense forces. 65 war. Fortunately, Lal Bahadur Shastri was the Prime Minister. I was a student at Allahabad, class 11. He gave a public lecture, he addressed the people in Allahabad. After the war was over, उन्होंने कहा जय जवान जय किसान. जय जवान उन्होंने इसलिए कहा और उन्होंने डिस्क्राइब किया कि जब तक कि PL 480 गेहूं नहीं आता हमारा देश आजाद, जब बंद नहीं होगा तब तक देश आजाद नहीं होगा. उसके बाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज का विकास हुआ, एक्सपेंशन हुआ, मैंडेट दी गई कि आपको पैदा करना है नो मैटर व्हाट हैपेंस. जय जवान. डिफेंस टेक्नोलॉजीज हमें प्रोड्यूस करने हैं, टैंक्स, हमें बंदूकें बनानी है. 71 वॉर brought another short term. Mrs. Gandhi met even deputy commissioners and district agriculture officers, vice-chancellors of agriculture universities of Punjab, Haryana, and some of the southern universities which were capable of producing rice. कि आप कुछ करें, देश आजाद तब होगा जब हम फूड प्रोडक्शन में आजाद हों. तो आज ये कहें एक्सपोर्ट करते हैं, कर सकते हैं और करते हैं, तो कहां से कहां पहुंचे हैं. इसमें पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का बहुत विशेष योगदान. हमें उन साइंटिस्ट, एग्रीकल्चर इंजीनियर्स, एग्रीकल्चर एग्रोनॉमिस्ट, जो भी जितने भी टाइप के एनिमल हस्बेंड्री एक्सपर्ट्स का सम्मान करना चाहिए, उनको याद करना चाहिए. एंड वी शुड बी ग्रेटफुल टू देम दैट बिकॉज ऑफ दैट India could stay independent and could steer its path without fear and any favor. Then we must also remember on this day that we have become self-sufficient in the modern technologies of space, atomic energy. We should also be proud of the fact that we have expanded and established education not only in science but in technology. Now we have 23 IITs. We started with 4. Punjab has 1. We have been there a few times. AIMS. Punjab has an AIMS. Most of the several states have AIMS. Idea that we would have games almost in every state and every big state. And many others. Today we can boast of 900 plus universities, about 700 odd labs in state and central labs. We have huge ecosystem of science and technology in India. And that should give us a place to stand. And there where we should celebrate the festival, Vigyan Sarvatra Pujyate. Very young thing. Okay, science for all. Science for everyone. और उसको हम पूजें. और विज्ञान के प्रसार का महोत्सव है. विज्ञान को घर घर ले जाना है. और हम सोचते हैं कि विज्ञान हम विज्ञान से influenced है almost every moment, every second. While I'm speaking because of science and technology. We're sitting in this excellent hall because of science and technology. But our aim should now be, can we be the leader in not only in ideas, but in the products. We should look at China. We are the second largest populated country. Soon we will take over China in terms of population.
by the time these young boys and girls are of our age, would have crossed about 150 crores. 145, 150 crores. Will be the largest populated country. Of course, gradually will decline in the number of people. But then should we work through science and only through science and technology, we can achieve the leadership in the world. Not in terms of the number of human beings, but in creating ideas, products and services. That would be really the celebration of science and technology. I urge upon every one of you, whether you pursue science and technology as your mission, as your career, but you should encourage it, let it happen. Second is, no country can prosper, no country of our size or similar size can prosper unless we start producing goods and services in our country. आज चाइना हर घर में घुसा हुआ है, पूरे दुनिया में घुसा हुआ है। क्या हम चाइना को बाहर फेंक सकते हैं? हमारा ये मकसद होना चाहिए कि हम चाइना को अपने घर से निकालें। There cannot be border conflicts, border issues and trade going together. I feel as an Indian very strongly, एक तरफ तो बुलेट चल रही है और एक तरफ प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, तो मैं ये मानता हूं फेस्टिवल ऑफ साइंस विज्ञान सर्वत्र पूज्यते तभी सक्सेसफुल होगा जब हम प्रोडक्शन शुरू करेंगे उन चीजों की, सर्विसेज वो करेंगे जो हम अपने देश में बनाएं और उसे इस्तेमाल करें। तो मैं नई उम्र के नई फसल जैसे मैं कहता हूं कि आप नई फसल हैं, आप इस कमिटमेंट के साथ पढ़ें, लिखें, बढ़ें कि देश के लिए आप वो चीज पैदा करें जिससे कि हम अपने पूरे विश्व में जो हमारा एक स्थान है, लेजिटिमेट प्लेस है, उसको हम हासिल कर सकें। यही हमारा एक 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस जो होगा वो एक कारगर होगा। ये सपना आप जरूर अपने ध्यान में रखें और इसको पूरा करने की कोशिश करें। जिस तरह से आर्मी लड़ती है उस तरह से हम भी लड़ें, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में लड़ें और आगे बढ़ें। मैं आशा करता हूं कि आप इस सब में कलेक्टिवली काम करेंगे और आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे और अपने बच्चों को प्रेरित करेंगे कि हम अपने ही देश में चीजें बनाएं, वही चीजें खरीदें। अगर अच्छी चीजें बनेगी तो व्यापार, हमारे लोगों को रोजगार भी मिलेगा, हम आगे भी बढ़ेंगे और नई नई चीजें बनाते रहेंगे। धन्यवाद, जय हिंद। अरे हाँ वो तो अच्छा, अरे हाँ वो तो खराब हो जाएगी, वो तो हो जाएगी, उसमें कोई शक नहीं है। अरे हाँ शाम तक तो आएंगे। Thank you so much, sir, for your enlightening words. Now I would request to call Professor Dr Anish Dua on the stage to hand over the memento to our guest of honor. ठीक है, मैं शाम को करता हूँ, शाम को। Thank you so much, sir. And it was a great pleasure to hear you and to just imagine about the historical developments that happened in 1970s,
the agriculture revolution that you talked about, and the great developments that science and technology needs to happen, that the younger generation needs to imbibe in themselves. It was really a pleasure listening to you. Now I would like to call our next guest of honor, Professor Dr. Anish Dua, on the stage. Sir, I would like to give a short introduction to our audience about you. Dr. Anish Dua is a professor of environmental biology in the Department of Zoology, Guru Nanak Dev University, since 1995. And sir, in administration to your many administrative and coordinated roles, you have also credited over 25,000 hours of formal classroom teaching, research guidance, and mentoring of postgraduate and doctorate. Hello. Sir, you are also a spiritual seeker associated with the art of living since 2003, and you have reached out to many thousands people across the world. Sir, you are also an author, writer who has many dozens of writings to his credit that range from specialized scientific research in the field of environment to being an expert on different aspects of life. So you are a great public speaker that I admire personally, who has over 25 years of acumen in public speaking and has conducted himself fearlessly from the stage. He can captivate audience with his powerful voice, diction and speech in all three languages, Hindi, Punjabi and English. Now, from a personal background, when I met Professor Anish sir for the first time, we won a youth festival trophy. And we went to him for a proposal of debating team, organizing a debating team in university. I still remember his words. He told me that Sanidhya in the next 7 to 10 months will reorganize this university in such a place where some place there would be allocution going on, where at some place there would be political debates going on. I would create more and more leaders in the university, and I personally believe that till the time we have professors like Anish Dua with us, the strongest pillars in the leadership of our university, students from our university will always prove to reach the greatest height of this universe. So now I would request sir to kindly come on. Let me organize myself in a minute and then I start. Yeah? Just like science, you don't take off until and unless you have set your table right. You have the necessary ingredients available, the equipment is in place, and then you take the journey. Good morning to all of you. Thank you, Sanidhya, for the generous words. I do not know how much percentage of that I truly deserve. But one thing is for sure, that we are all in our own ways committed to be contributing, committed to be taking ourselves as individuals and then the society forward in a meaningful manner. Before I begin, I would just like to say thank you Dr. Bindya, the entire physics department, colleagues from there, for organizing this beautiful event. Yes, the national agencies exhibit confidence in our capacities and they give us these kind of events to organize, to host. That's an acknowledgement to the capacities that we have. But then the willingness is equally important. I would like to, this will continue like this, you cannot help anybody who's not willing to be helped. So people could be having great capacities, but if they do not have the will to move forward, nothing can be done. Nobody can give you the great ideas, nobody can give you the beautiful support from outside until and unless, when I'm saying you, I include myself in that category, until and unless we are ready. In that sense, I take pride being part of Guru Nanak Dev University, that we, as in all of us who are in the leadership role, and I like this voice, which is in between contributing something someday, I do not know, you do not know, consciously, unconsciously, subconsciously, some message is going into the Chetana of this young child
who might turn out to be a great scientific scholar in some years from now. So there is absolutely no reason that it should disturb me or any one of you. What I was saying was that here in Guru Nanak Dev University, all of us who are in the leadership role, the Vice-Chancellor, the Dean, Academic Affairs, the Registrar who takes care of all the entire administrative, I would say, tasks. I have been assigned the role of students' welfare, so that students are in a good space. They are happy here, and whatever they need, they get that. I'm in that role. And all of us, we are doing our level best, and you must, if you on any particular day come to Guru Nanak Dev University, and not on a car or not on a scooter, but on foot, if you're moving around in the campus, you would see the diversity of options that you get to witness, diversity of beautiful things that are on this campus that you would witness here on this campus. The beautifully, I would say, laid out lawns, the flowers. We are in the spring season. I do not know how many of you go and sit in the sun in those lawns where the flower beds are there. And right outside my office in Dean Students Welfare, there are students playing badminton. There are some people who are playing musical instruments. That's the kind of vibrant, youthful institutions we should have anywhere in the world, I would say. And when we talk about institutions world over, we talk about their excellence, how they are better than us. But why can't that excellence be created here, locally also? And I'm sure you would all agree with me on this. Guru Nanak Dev University, though situated far, far away from the capital city of Chandigarh, we are not a capital city, one. We are not near the capital city. We are right on the border. But we do not take these as our disadvantages. We are no less than anybody. That's the kind of pride that we take here in Guru Nanak Dev University, of being in Amritsar and being in Guru Nanak Dev University. And I hope all of you would agree with me. Yes? Yeah. So that's one part. So when we celebrate science, Vigyan Sarvatra Pujyate, whether you say it or not, you are already doing it. Starting your day in the morning when you brush your teeth, you are taking a product which is a product where the beginning was some scientific part into it, that how is it that it is good for our oral health? Is it a good product or not? What are the ingredients and what kind of formulation should go into this? This is no less than a medicine. Starting from that and taking flights in the open sky, every aspect of our life, science has a contribution into it. So in that sense, I would just like to use a particular expression where I would say science connects. We are in different nations, Western world, Eastern world, India, China, US, European nations, Pakistan, whatever. But one thread that connects us all is science. You see, when you use science, when you apply science in your life, you do not ask whether it was a German idea, or a French idea, or an Indian idea, or an American idea, or a Chinese idea, or a Far East Taiwanese idea. You don't ask, you just consume it. So in that sense, science connects us all. So that's what I believe in. So when we are today celebrating 75 years of India's independence, and we are celebrating science, my understanding is that we as a nation, I would not say had lost, but I would say we had forgotten our glorious past. Most, excuse me from the front row, sir, if I look at them and address them more, forgive me for that. You are fortunate that you are at a threshold of your life when you are entering into the meaningful years of your life, at a time when India is, I would say redoing a lot of things. Ask us.
Sir is ahead of me by, I would say, a few number of years. So he has seen much more than I have seen. You would see much less than what I have seen. When I'm saying that, I'm saying some things that were not that great in the last few decades. And it is said that if you want to take away something from somebody, if you want to take away something very precious from somebody, take away a sense of pride, and they'll be defeated. In many ways, we were not in the best of our, I would say, spice of knowing that how rich we are. Whatever could be the reasons, political, economic, I don't want to go into the details of that, but the fact is, it was that way. A lot of good things happened in the last 75 years. The institutions, as Sir was talking about it, agriculture, defense, but a lot did not happen. You see, if we could build missiles, why can't we build clean cities? It's not that we cannot, we can. But it is the will that is required that I was talking about in the beginning. Can you imagine, you as youngsters, we as a nation have progressed to be generating food for the entire nation and now exporting also, not only in the sector of food, in the field of defense, as Sir talked about, Jai Jawan, Jai Kisan, because this was the basic need. We required it. We needed to eat food. We needed to protect ourselves from these mighty forces which were in our neighborhood. It was needed. But there were a lot of things that were not in that dire need, but we could have done that. But we didn't. We are doing it now, and we are late. Now we cannot afford to be delaying it further. A lot of damage has happened. A lot of damage has happened that we need to repair. And we need to look at that in a particular manner. And that manner is something which I call as science, the scientific approach. Today I'm not talking about here as what we have lost and what we have gained. You all, youngsters who are in schools, high school, you are in college, you are in the university, pursuing various programs. You could be in your high school pursuing science as one subject. You could be doing your graduation in the field of science. You could be doing a post-graduation in the university or doctorate. I would just like to share from my journey what I think is important. The way I conduct myself, I do not bring to you any talk which is from the textbook. The biggest sharing that people like us, Dharamveer sir, Mrs. Dharamveer, my colleagues from the physics department, is the journey that we have undertaken and we can share from our experiences. I still remember the cover of my biology book of 9th standard. The year was 1983. I'm saying biology because biology fascinated me. What fascinated me in different seasons were creatures around. When the rain comes, different kind of animal diversity you get to witness around you. When it's winter, it is different. When it is summer, it is different. Biology fascinated me in more than one ways. I still remember the cover of my biology book. I ask you that how many of us, we choose science because we like science, we are passionate about science. And how many of us, we choose science because it's a fashion to be taking science if you are a high scorer. You see, if you are 98, 99, 100% marks in the school, obviously you would go for science. That's not the way. Just because of the reason you could score high in all subjects
Are you cut for science? That is the question that you need to ask yourself. Does science fascinate you? That's the question that we need to ask. Because if in a class of 50 students, if there are only 5 who are passionate about science, and 35 are there by default, God knows what reason. Somebody could be opting science just because of the reason, oh, my friend opted for science. Hey, by the time you knock the door of the real life, your friend would be gone. He will be in which part of the world you wouldn't even know. I don't know where my class fellows today, I know. Science connected us all, but in between there was a time we didn't know. We were not in competition with each other even. So what I mean to say here is, what is important is not because you have scored high and it's fashionable to be pursuing science that way, or your friend opted for science, that's why I also would opt for science. There are some other reasons also which I can't cite from the stage. Just because of the reason parents want you to be taking science. No. I'm sure most of us who are sitting here are passionate about science. And I would go a step ahead that even those people who are not pursuing science as a subject, we need to instill in them also a temperament which is called a scientific temperament. More and more people need to be celebrating science, whether while they are pursuing formal science degrees and programs or outside it. And I'll build my case eventually when I'm talking about that. So there are 4 points that I would like to share with you this morning. The first thing that I shall be talking to you would be, what is science? For me, science is scientific temperament. Oh, this building, this place, this landscape is beautiful. We as a scientists ask, prove it, it's beautiful. Why is it beautiful? Was it beautiful yesterday also, when you were in bad mood? Will it be beautiful 10 years from now also? Now let's have a discussion around it. There is a temperament. We just don't say, oh, it's beautiful, and put an end to it. This is a very kind of a plain example that I have just picked up. Science and scientific temperament. I'm saying it to each one of you here who are sitting here as students of science, that we all must have it. We wonder that it's beautiful. We question, why is it beautiful? We explore, what makes it beautiful? This is a yellow flower, it's beautiful, we wonder. It's beautiful, lesser beautiful than yesterday. Yesterday it was installed, today it's lesser beautiful. What has made it lesser beautiful today than what it was yesterday? And if it is yellow, what makes it yellow? We explore, we question. Then we prove. Through experiments, we test it, we retest, and sometimes we fail. We face our failure proudly. We don't run away from it. Many a times, the best of the discoveries, the best of the findings, I would say, have happened through failures. You were looking for something, but you found something else, and you shared that with the world. Can you imagine that? That's scientific temperament. Wondering, questioning, proving, testing, retesting, failing. We have examples of the stalwarts of science, missile man with the cutout that we have outside. You all know the story when he took upon himself the failure of the missile program that he was heading at one time. Taking a failure also with the same kind of a ownership. Sir was talking about building leaders now. And leaders, I'll come to that. Let me not digress from the thread that I was speaking on. So that's scientific temperament. Wondering, questioning, exploring, proving,
failing, again questioning why I fail, and on top of that, not locking ourselves in a 10 by 10 or a whatever dimensions, the room or lab that one is working in. Not restricting ourselves there only. Then whatever I am doing, picking up a piece of paper and pen, or on your computer or on your smartphone, keeping a record of all that. And then sharing it with the world, publishing it, communicating it, scientific writings, putting yourself to the test. Hey, I am doing this, test me, score me, whether my publication is of this impact factor or that impact factor. That kind of a boldness, it is required to be having that scientific temperament that each one of us we need to have. The first thing I call as scientific temperament. All of us we need to have it. Can you imagine when Sir talked about that 1965 through till 1971, giving a slogan, Jai Kisan, please produce more and more and more and more and more and more food. What do you need? University? More funds in the university? That's how the national policy makers and the planners offered it to the entire nation. But today, in 2022, if somebody says, oh, our green revolution was all wrong. Was all wrong. That is the cause of cancer today. That is the reason that our soil lost its glorious organic content into it. We are so dependent today on inorganic fertilizers, the nitrogen and the phosphorus from outside. Accepting, yes. Today in 2020, 2021, 2022, we realize things could have been different. But that was the need then. We needed food. At that point of time, we could not have afforded to be talking about, oh, I'm a vegan. Oh, I want organic wheat. Hey, you did not have wheat. Organic wheat at that time was not the question. Of course, there must be people who still might be producing organic produces in their neighborhood and enjoying the good health. But what I'm saying here is, in science, we are also in that particular space to be acknowledging and admitting, yes, that was good then, but today we can say that that was bad. I call it like this, that is also truth and this is also truth. It might take me into a particular, by the way, in school, I always felt that if you want to be a scholar in the field of physics, you need two brains. That's what my perception about physics was. It has changed over the years, but it's beautiful. And you might be thinking about biology in a particular manner. What do these guys do? I'll tell you what do we do in the further points that I raise. So what I mean to say is, for me, the scientific temperament is a thought. You see, whatever you need to question, whatever you need to wonder, there is a thought. Can you imagine? There was one plain, simple thought. Are you with me? All of you? Are you with me? And am I reaching out to you? Is it clear? When I'm articulating myself, मैं पंजाबी हिंदी बहुत चंगे तरीके से बोल लेना नॉलेज भी आ रहेगा गेर बदल के wherever needed. And can somebody help me? These 6 lights are blinding me. I can't see you. Can you dilute it, switch it off? Because otherwise I'm unable to connect with you. You see? If you could dim it further, as low as possible. Oh, thank you. There is no dance drama happening here that needed the spotlight here. So the thought is very, very important. Can you imagine one guy, one day, thought he will have his own launching pad and a company, and today he's privately launching rockets into the sky. You know that? He's the richest
Are you with me? Yes. It begins with a thought. It begins with a good thought. It then is supported by observations, hypothesis. Who would fund you? Who would give you money if your idea is not practically achievable? The hypothesis, the idea that you are sharing with them. Then the experiments and taking it to the level of the theory and then applying, all amounting to reason and rationality. Can you reason out? If you are sitting in front of somebody and you are sharing your idea with them, can you defend yourself? That's the question. So that's what I would appeal to each one of you as young students would be. Build that, nurture that temperament, which is called as scientific temperament. Question. But doesn't mean become rigid. You see? When you build up a particular kind of a temperament of asking questions, the flip side of it is, the hazardous side of it is you stop listening. You only question. When you question, also listen to what the other says. That's the balanced way of questioning. It's not that, oh, I am the, you can say, wiser one who will only ask questions and would not listen to what is said by others. No, that's not a good way. So I would say that this is the kind of scientific temperament that we need to build. And since I was asked in the invitation, talk about from the annals of history of science, I will be supporting my points with some examples. In biology, because I come from the field of biology, ecology, environmental biology, so I'll be giving you examples. There are some indicator species of, it could be insects, it could be mollusks. If they are around, you don't need to worry, that means the environment is good. If you have slugs and snails moving around in your garden, that means your garden soil is good. These are such mighty indicators of ecological health. But that you will only come to know when you look at that mollusk as a beautiful creation I'm talking about. When you look at a mollusk, when you look at a slug and a snail, as beautiful as a butterfly. But if you say that the butterfly is beautiful, but a snail isn't, oh, it's an ugly spot in my garden, that means you do not have a scientific temperament. You are partial towards one set of creation in one way and another set of creation in another way. Not that way. And how this scientific temperament was nurtured in us in our 9th and 10th standard, I still remember those 2 years of my school biology practicals where one day we took you see, the schools were not that greatly equipped in resources, so the biology teacher tells us tomorrow bring one bread slice from home. So we did. And it was kept in the open to be seen that in how many days that black mold would be developing. Are you with me? Yes. 1983, keeping a bread slice open in the air, seeing the fungus mold developing on that, do you think I would ever leave anything uncovered in the refrigerator? I learned my science well. I would not eat from those sources where the potential of food getting bad is higher. Are you with me? Yes. It's not that you practice science here and then you completely forget it and completely ruin your own health and you forgot what was taught to you. So what I'm saying here is, I still remember removing the parallax and seeing two things as one in those practicals, science practicals that we did in the school. There is one thing here, there is one thing here, and then you eventually see it like this, that it sounds and looks like one to you. Was called as parallax removing. Yeah? Those kind of things, that's how we were trained in 9th and 10th standard I'm talking about. Question. When you look at the microscope, so on the stage there is a drop of water from the pond and all these microscopic living creatures are
that opens a beautiful, beautiful vista for you. That's what I'm saying. Build this scientific temperament where you reason. And it is visible to us. It's not that now, in 2021, 2022, we are talking about science. Science has been celebrated since millennia, for so many number of years. While I was preparing myself to come here, I scribbled some thoughts. There are many, many works that are centuries old, and we have the evidence of these in the form of records. These records could be any records. These could be written records in the form of journals, papers, scriptures. These could be inscriptions. These could be writings on the caves, on the stones, on the metal parts. It could be anything. We have records of scientific documents. For example, you can say 64 GB, you can say cards with them which they deposited somewhere. Oh, I am the one who did it in 2020. We are looking at the metal pots. We are looking at the, you can say, sandstone carvings where this zero inscription is there, and we are questioning what did that mean to them. And then we have something which is completely cannot be refuted, and we know that this is the juncture from where this is the person who gave us zero in the history of science. So we have records, we have landmarks. Look at it. One pillar, iron pillar, which is rust resistant. For somebody, it could be you just went there and looked at a pillar, beautiful pillar, got a picture, clicked, came back. That's it. That's not science. That's not scientific temperament. If you go to that particular pillar and ask how many number of years old, they tell you don't ask in years, ask in centuries. And why it hasn't rusted. And get into that particular kind of a discussion, you would realize those were the people, they were that great scholars for the field of metallurgy and how to handle our metals, that it could survive for such a long time. That is an evidence of great science and the scientific practices that we had. So in the form of records, in the form of landmarks, in the form of artifacts, magnificent architecture Sir was talking about, do you ever think that how these big and grand stadia, temples, forts, palaces were built minus the modern day technology? Modern day technology is only an extension of this head. If we are wise today, we were wise then also. The technology is of one kind today, technology was a different kind then. But we were advanced at that level also. But the problem with us as humans is we think we are better than what our past was. And when I culminate my talk, I'll tell you which direction does it go. So one thing is for sure, in the form of medicine, sir, ma'am, you would agree with me, when we were consuming local food, you see, at that time we were not saying that, oh, I want an avocado sandwich, where avocado is not even grown around you. It has to come from some place far off. Fruits, hey, have Himachal apple rather than having Fiji apple. We were wise, we were consuming local. For we knew that it is good for us, we can sustain it, and it is good for our health. So the food practices indicate that we had scientific temperament. And of course the kind of traditional medicines that we had. So this is the first point that I just wanted to say. You as students of science, make sure that you have scientific temperament. The second part. My colleagues from physics department, from this university, from other universities, various scholars, you will be moving forward to become scientists. Any thought that you exercise could be very simple, let me say. You could be spending 3 years, 4 years, 5 years doing your project work, your PhD, and some friend of yours from another subject,
somebody in the society travel करके जाके field में कोई काम करके आते हो, इसका फायदा क्या है? उनको जवाब देना ये मुझे भी नहीं पता। आने वाले दिनों में इस आइडिया को किस तरीके से बहुत सारे लोग आने वाले दिनों में लेकर के जाएंगे आगे। Can you imagine the mathematics and its, I would say, accuracies? Theoretical physics, they are the ones that help us in launching these technologies into the other parts of the, you can say, universe. Thought could be very simple, very, very simple. But how that thought, you see, I finish my project, I publish it, I don't know how that particular thought is being used as a primer by somebody else to be building upon it further. That's how technology is born. Somebody gave a thought which at that point was very, very simple. So never ever be afraid of being part of something which sounds and looks simple. It is simple, but it's not lesser important. When I say that, I would give you from the annals of history 2 or 3 examples. Mendel was looking at sweet peas. This is the season. 10 days from now, you come to my house in the garden, you'll have sweet peas, flowers. Simple observation, the flowers are of different color. मटर जो है उनका साइज उनके ऊपर वो wrinkled है, smooth है, yellow है, green है. Simple observation, and today that is the basis of modern day genetics. At that time it was simple. So never be afraid of giving a simple idea, sharing a simple idea, or exploring. Darwin. Darwin everybody knows. Evolution. But there was another guy called Wallace. I don't know how many of you know him. He independently gave the theory of evolution. At the time he was traveling in the high seas. And he wrote a letter to the society there, and Darwin acknowledged, a scientist, scientific temperament, that whatever I am saying, he's also saying the same thing. Independently. Darwin was looking and his observations were different. Wallace's observations were different. Wallace's observation was in the Malayan archipelago in the East Asia. This is Australia. This is East Asia. We are somewhere there in India. He said that if I look at animals' hair, they are completely different. And if I look at animals' hair, they are completely different. Why? Then he realized these animals have commonality with Asia, and these animals, they have that commonality with Australian region. So he made an imaginary line here, which is called as Wallace line. And he became the father of biogeography, Wallace. Today when I'm talking about all this, go Google and you will come to know if you have that scientific method. And he gave the theory of evolution from this particular example. Darwin was giving it in the South American, you can say, coast. Darwin's observations in South America, Wallace's observations in the east of the Asia, in the Malayan archipelago, and they were both coming to the same conclusion of the theory of evolution. You should know these guys, Mendel. आज आप सारे के सारे बात कर देते हो कि पेंडेमिक में टेस्ट कौन सा करवाया, रैपिड टेस्ट करवाया कि आरटीपीसीआर करवाया. ये आरटीपीसीआर रैपिड तक पहुंचते कब अगर आपको हरगोविंद खुराना अपना आइडियाज ना शेयर करते that what exactly is the nature of the nucleotides. They are the ones who become the basis for the protein synthesis. Are you understanding what I'm saying? Are you with me? So an idea could be very simple, but never ever be apologetic about it. It's the simple building blocks that make the beautiful, beautiful creation on top of that. Then you'll ask me that my friends tell me that there is no money in science. If you want to have the flashy cars and want to make it big, explore something else, go into the field of business.
If you want power, go into the field of civil services and so on and so forth. Power is not always bad. You see, the moment I said power, you look at it as an ugly thing. No, power is very, very important, but what do you do with that power is something which is a questionable question. If you are in a powerful position, you could be making things big overnight because you have the power. But if you have the power to assert on the people, you might suffocate other people who are right next to you. So before you look at science as a career, I ask you again, connected with the first point, are you passionate about science? Build passion about science, and it takes more than 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 years. It takes a lifetime. We have people sitting in front of us. You ask that man, oh, हमारी यूनिवर्सिटी में, पंजाब यूनिवर्सिटी में होते थे, तो हम इस तरह से बात करते होते थे, डॉक्टर चौधरी पॉलिटिक क्रोमोसोम्स. एक शख्स ने पूरी जिंदगी उसी क्षेत्र में अपना सारा का सारा लाइफ टाइम डिवोट की हुई. जो लोग मुझे जानते हैं, अगर आप उनसे जाके पूछोगे डॉक्टर अनीश दुआ, वो बोलेंगे अच्छा अच्छा अच्छा, मछलियों वाला, फिशरीज वाला, वेटलैंड्स वाला. That's how I'm known as, because I have invested my entire resource into the field of river and wetland ecology and fishery science. Do you have that in you? And you must have that, rather than thinking that how much money would I earn if I pursue science. That's the third point that I wanted to share with you. And the fourth one I would say would be, whenever I go and talk as a scientist in non-science deliberations, people ask me, you don't look to be from sciences. You speak about management, leadership, culture, art. I said, I am able to do that because I'm a scientist. As a scientist, you are not to lock yourself in. You see, generally you would see many cases where scientists, they disconnect themselves from the rest of the world. It is required if you are that passionate. I'm not undermining that. Do that. But then have that ability to link it up, connecting the dots. How my work is going to be utilized by various people, or how it influences and impacts other people. I would call it philosophizing. You see, when you pick up a degree of PhD, what does it stand for? Doctorate of Philosophy in Science. So if you are pursuing science as in higher, I would say, domains, learn to philosophize and be original. Don't be afraid. People who can't face you, they might ridicule you, they might laugh on you, because that's the only thing they can. Let me tell you, most of the people who are laughed at or ridiculed are the ones who are powerful, who have the power of thought with them, who are beautiful, who are seen as threat. So what I would say would be, if you are pursuing science, learn to philosophize also. That's the fourth point that I would like. And in the last, I would just say one thing. The pandemic, last 2 years, have taught us a lot. There are more people talking about science than disease prevention, disease detection, what antiviral drugs. कौन बातें करता था इन सारी की सारी बातों की? जितनी बातें पिछले 2 साल में हम लोगों ने कर ली हैं. More people are talking science, but the question is that they need to be talking about it in the right direction. Before I conclude, I would just like to say here, know it that we are all part of a continuum. ये हम हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड में कोई पहली बार इंटेलिजेंट नहीं बने हैं. जो इतना कुछ हम लोगों ने खड़ा कर लिया है, बना लिया है, और उसके ऊपर हम वी आर टेकिंग प्राइड इन दैट. ये पहले भी बड़ी बार हो चुका है. एक बार पीक आती है, फिर उसके बाद कोई भी कारण हो, हम अनसाइंटिफिक हुए हो, कोई कैटास्ट्रोफे हुआ हो, हमने नेचर को तंग किया है, फिर नेचर हमें तंग करे, कोई भी कारण हो सकता है, सब कुछ खत्म हो जाता है.
फिर दोबारा से एक कहानी शुरू होती है, फिर हम ऊपर आते हैं, फिर कितनी देर में खत्म होता है पता नहीं। इसलिए कभी ये भूलना नहीं that we are in a continuous continuum, and in that continuum I would do my part. This continuum is big, and my contribution could be in the form of a speck, but it is no less. And doing it correctly with the right kind of intentions. Let me tell you, people who are well intentioned. ये जो पहले बात मैंने दो की थी, पैसा और पावर, ये भी आता है. You have to have patience for that. But at the root of it is, are you righteous? That's the question that we need to ask. My best wishes to each one of you on this beautiful journey called science, and thank you each one of you for giving me this opportunity to share my ideas with you. Thank you once again. Thank you so much, sir, for such a knowledgeable, and it was really an exhaustive seminar covering all aspects of science and technology. You talked about the scientific thought and the scientific temperament which needs to be developed in today's generation, because it is very much imperative for all of us today to have a critical thinking, and that critical thinking can only be developed if you have that scientific temperament in you. So thank you so much, sir, for your enlightening words. Now I request our guest of honor and all our esteemed teachers to kindly proceed for the tea break, and all the students. Yeah, and I request Professor R.C. Singh to come on the stage along with Professor Anish Dua for the momentum ceremony. I like to be on the ground. Okay, sir. I request our guest of honor to kindly proceed for the tea break, and all the students to kindly stay here for the magic show, for the arrangements of the magic show. All the coordinating teachers can also go for the tea break, but students have to stay here for the arrangements of the magic show.
आ गया हाँ आ गया याद हो जाना कर देना
Organizing team members, please ensure the decorum of this hall. And everyone, please be seated. Good morning and a warm welcome again to one and all present over here. It's me, Priyanka Sharma, your new host for the upcoming sessions. बचपन में मैं मानती थी कि जादू होता है। मेरे बचपन की कल्पना ने मुझे ये विश्वास करने की अनुमति दी कि उड़ने वाली परियां, बात करने वाली बिल्लियां, हैरी पॉटर और नानिया सभी वास्तव में मौजूद थे। मुझे उस जादुई दुनिया का हिस्सा बनने की उम्मीद भी थी। जैसे जैसे बड़ी होती गई और वास्तविकता की दुनिया अपने तरीके से रिश्ते लगी, मेरी कल्पित दुनिया जो इतनी वास्तविक लग रही थी धीरे धीरे दूर होने लगी। इस दुनिया में कोई सुंदर उड़ने वाली परियां नहीं थी, कोई जादूगर नहीं थे, यहाँ कोई वफादार नानियां नहीं थे। लेकिन क्या होगा अगर मैं कहूँ यहाँ एक जादूगर मौजूद है? या क्या आपने कभी विज्ञान पर आधारित मैजिक शो के बारे में सोचा है? ये कैसे किया जाएगा? Today with us we have Dr. Dharamveer and her team to show this unexpected magic show. She is an IIT Kanpur alumna and a postdoctoral. Sometimes just a little experiments don't work, and then if today that happens, what do? Boo! No, हमें boo नहीं करना. So let me introduce ourselves. We belong to the Society for Promotion of Science and Technology in India, and I am Dharamveer, and along with me here is Mr. Nikhil Garg, who speaks very good Punjabi, and apart from that, we are helped by Manipalji here on the camera, and the chief demonstrator is Aman. Shishpal will be helping us, and there is another Aman. So we begin in the traditional way with the lighting of the lamp, for which Nikhil will be guiding you. So Nikhil will take over from here. Thank you so much. Adab, namaste, sat shri akal. So sabnu shmuliyat karan te bahut bahut shukriya. Te sabda main again welcome karda to all the series of this experiments. So jidda madam ne gal kiti apne lighting of the lamp. So मैंने एक बड़ा गुरबानी का श्लोक याद आ गया, कहते ज्ञान अंधेरा मिट गया गुर चानन ज्ञान चिराग. So अपनी किसी भी इवेंट में शुरू करने तो पहला अपनी ये हमेशा तो ट्रेडिशन रहा है कि आपां GNDU आज जिथे स्टेज के ऊपर खड़े हैं आपां इस अज्ञान दे अंधेरे नूं जिन्हों आपां बचपन दे विच मैजिक दा नाम दे दिंदे हां. जो भी वो चीज़ जी अपने समझ दे विच नहीं आती, समझ तो परा होंदी है, उसनूं आपां मैजिक का नाम दे दिंदे हां. तो उसनूं रिवील करन दे लई आज SPSTA दी टीम आज तुहाडे विच आई है ते मैं सबदा बहुत बहुत धन्नवाद करदा ते मैं आस करदा कि हर बच्चा, हर एक ऑडियंस, एक स्पैक्टेटर साडे नाल मिल के इस पूरी सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स का आनंद लैणगे ते पार्टिसिपेट करनगे. सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर. ते इस तो बाद मैं स्टेज से इनवाइट करना चाहूँगा all our dignitaries, and I would like Dr. Vindya to please invite all the dignitaries with them on the stage for lighting the lamp. Everyone, please put your hands together.
So everyone, are you ready for the show? So मैम ने अभी कहा कि यार बू नहीं करना, तो yes ना वो बू वाली yes ही थी. So we have all the way came across from Chandigarh to Amritsar just for this magic जो मैम ने उसको आज के एंकर ने हमारे नाम दिया मैजिक शो. तो ये सारे एक्सपेरिमेंट्स के लिए. So I think सभी यहाँ पे साइंस के प्रेमी हैं. Yes or no? Yes. क्या बात है. साइंस के प्रेमी के नाम के ऊपर मतलब हर बंदे की आवाज खड़ी होगी. So everyone, I'll try once again. So are you all ready? Yes. Thank you. ये लॉ प्रज्वलित. थैंक यू सर. आपने ये पानी में जला दिया क्यों भाई? अमन, पानी में लॉ कैसे जला दी? और क्या तेल खत्म हो गया था? यस मैम, हमारा तेल खत्म हो गया था और ऊपर से तेल भी काफी महंगा हो चुका है, तो हमने ये दीपक है पानी के साथ जलाया. ये था. थैंक यू. चार जो हैं केमिकल सॉल्ट्स हैं और आजू बाजू में विशेष मैजिक है जो अमन ने पानी में जलाए हैं. तो केमिकल सॉल्ट्स के नाम हम प्रोजेक्ट कर लेंगे अभी. अमन आप बताइए पानी में कैसे जला दिया आपने? यस मैम, ये बड़ा ही सिंपल है. जैसे आप सभी जानते हो हम घर पे अपना कैंडल यूज करते हैं दीप जलाने के लिए, तो मैंने जस्ट कैंडल का वैक्स ही यूज किया है और अपनी कॉटन के ऊपर मैंने कैंडल का वैक्स लगाया और बत्ती बना दी उसकी, और जब हम उसको पानी में डालते हैं सिर्फ वैक्स ही जलेगा. तो देखने में ऐसा लगता है कि जो दीप है पानी से जल रहा है, लेकिन एक्चुअली में ये वैक्स ही जल रहा है. पानी का कोई रोल नहीं. पानी का आपको देखना क्या शो के बाद तमसो मां ज्योतिर्गमय. तमसो मां ज्योतिर्गमय हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चले. ये सब आप सभी का, हम सभी का मोटो है, हमेशा ही रहता है. So that's a beautiful experiment. Now I request अमन, इसको हटाएंगे आप? यस मैम, हम हटा देते हैं सब. ठीक है, हो गया. इसको हटा लीजिए, हटा लीजिए. अच्छा तो जाओ. Now we shall move to the next item, which is a brief skit. ये जो इतना ड्रामा की तैयारी देख रहे हैं ना, तो अब हम skit part पे आते हैं. It is a story about how magnetism was discovered in Europe. Actually, this story is from 10th or 11th century. Nobody has recorded it very well. So around that time, but let me emphasize here that 11th century is from our time standards, it's not really ancient. But before that, magnetism was known in the ancient world
Particularly, it had been used in China and India. However, today's story is about the discovery of magnetism in Europe. यूरोप में चुंबकत्व का आविष्कार किस तरह से हुआ, इसके बारे में है। लेकिन इसके शुरू करने से पहले महिपाल जी, आप कोई अंगीठी जलाना चाह रहे थे? सभी के लिए खिचड़ी आज मैं बनाऊंगा, बहुत ही स्वादिष्ट खिचड़ी, स्पेशल हरियाणा से। तो खाएंगे सभी? थैंक यू। ये एक इको फ्रेंडली अंगीठी लाए हैं महिपाल जी कहीं से, और ये एक तरफ है। देखते हैं, हाँ देखते हैं। अभी इसको बनने दीजिए, फिर बीरबल के बारे में बाद में बात करें। चलिए, महिपाल जी की खिचड़ी गरम करी। अमन जी इस टेबल को हटा दीजिए प्लीज। शीशपाल जी अब हम इस नाटक को शुरू करने जा रहे हैं, और एक बार फिर निखिल इसके बारे में बताएंगे। जी, हमने बड़ा ही आज तक हिस्ट्री के बारे में सुना होगा कि हिस्ट्री के अंदर मैग्नेटिज्म का रोल, ठीक है ना। तो आज हम आप सभी को एक हिस्ट्री का ही बहुत ही बढ़िया सा एक पीस बताने जा रहे हैं कि किस तरह से हमारे भूतपूर्व हिस्ट्री के अंदर मैग्नेटिज्म की कैसे डिस्कवरी हुई, और उसी डिस्कवरी का आज हम रोल इस पूरा ड्रामा के जरिए आप सभी को दिखाने जा रहे हैं, ठीक है। सो बड़े प्यारे प्यारे बच्चे कॉस्ट्यूम्स के साथ आप सभी के सामने हैं। सो ऑल ऑफ यू प्लीज पार्टिसिपेट योरसेल्फ। भेड़े प्लीज चलिए, लेट्स रोल ऑन। चलो मूव ऑन, चलो डंडा नहीं मारना, डंडा नहीं मारना, ना डंडा नहीं मारना। नॉटी शीप प्लीज। अरे चरवाहा जी देखिए, अरे इधर भाग रहे हो? अरे रुको, चारा भी चलवा दो। चलो। नॉटी आप रहिए, बाकियों को जाने दीजिए। अरे आप किधर भागे? अरे रुको, अरे किधर गई? अरे चलो चलिए, अब आपका हो गया, चलिए शाबाश। शीप थक गया, थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ। फास्ट। आपको भेड़े चाहिए कि क्या इनको भेज दें? चलो, आराम बहुत हो गया, मुझे वो ढूंढनी है, 2 भेड़े गई कहाँ? अरे ये किसने पकड़ लिया? कौन है यहाँ? अरे मेरा तो पैर भी पकड़ लिया। कोई बचाओ भाई, यहाँ कोई भूत है, बचाओ भूत। देखो भाई, मुझे पकड़ लिया किसी ने। इस पहाड़ में तो इसका हाथ भी पकड़ लिया, इसका पाँव भी चिपका हुआ। अरे लोग एक काम करते हैं, गांव के पड़ोस में किसी सियाने आदमी बुलाते हैं, जिसका नाम है प्लेनी। किसी सियाने को बुला रहे हैं। ये क्या हुआ यहाँ पे? उनका नाम है प्लिनी। वास्तव में प्लिनी ग्रीक फिलोसोफर। अरे कुछ नहीं होता। मैंने ऐसा सुना है कि ऐसे कुछ पहाड़ हैं
जो समुद्र की चीजों को अपनी तरफ खींच लेते हैं। और मैंने ऐसा भी सुना है कि भारत में एक ऐसा मंदिर है जहां पर मूर्ति ऐसे ही हवा में तैर रही है, और चीन में भी ऐसे ही पहाड़ हैं जो चीजों को अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं, अपनी तरफ खींच लेते हैं। मैं आपको दिखाता हूं, ये देखो, ये है वो पहाड़ का टुकड़ा जिसपे ये चीज चिपक रही थी। ये देखो, इसकी छड़ी पे यहाँ पे लोहे के कुछ पीस लगे हुए हैं और ये पीस इस पहाड़ के टुकड़े पर चिपक रहे हैं। और इसके शूज देखो, इसके शूज में भी नीचे कीले लगी हुई हैं, कीले, वो कीले भी इस पहाड़ के टुकड़े पर चिपक रही हैं। तो यहाँ पे कोई भूत नहीं है। आइए अब हम 21वीं सदी में चलते हैं। आज की 21वीं सदी में हम इस पहाड़ के टुकड़े को मैग्नेटाइट के नाम से जानते हैं, जो एक परमानेंट मैग्नेट होता है। और इस मैग्नेट का यूज करके हमने डिफरेंट शेप्स ऑफ मैग्नेट्स बनाए, जैसे कि बार मैग्नेट, यू शेप मैग्नेट्स। वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। इस डिले के लिए प्लीज एक्सक्यूज अस, आप हमें माफ करेंगे, क्योंकि हम सबको पता है कि बिना रिहर्सल के ड्रामा करना कितना मुश्किल होता है। सो आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ये डिफरेंट शेप्स ऑफ मैग्नेट है। ये मेरे पास है एक बार मैग्नेट है, एंड यू शेप मैग्नेट है, और कुछ मेरे पास रिंग मैग्नेट भी है। जी हाँ, हमारी जो पृथ्वी है वो भी एक चुंबक की तरह ही बिहेव करती है। हमारे जो पृथ्वी है उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड होती है, लेकिन हम उस मैग्नेटिक फील्ड को देख नहीं सकते। तो उसको देखने के लिए मैं आपको यहाँ पर एक डिवाइस दिखाऊंगा जिसको हम कंपास बोलते हैं। तो अभी आपके सामने ये कंपास है, अगर आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो। तो ये जो कंपास है दिशा सूचक के अंदर, इसमें एक निडल लगी होती है जिसकी आप देख सकते हैं, आपको ये दिख रहा होगा स्क्रीन पर, ये कंपास है और इसकी हेल्प से इसमें एक निडल लगी हुई है। उस निडल की जो डायरेक्शन है वो हमेशा नॉर्थ से साउथ की तरफ ही रहती है। इसका रीजन ये है क्योंकि हमारी जो अर्थ है इसकी अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड होती है जिसकी जो डायरेक्शन होती है वो नॉर्थ से साउथ की तरफ ही रहती है। इसलिए इस निडल की जो डायरेक्शन है वो हमेशा नॉर्थ से साउथ की तरफ ही आपको दिख रही है। सिमिलरली हमारे पास जो डिफरेंट शेप्स ऑफ मैग्नेट है उसका भी अपना एक मैग्नेटिक फील्ड होता है, वो भी मैं आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश करूंगा। तो मेरे पास यहाँ पर जो ये डिफरेंट शेप्स ऑफ मैग्नेट रखे हुए थे, बार मैग्नेट, यू शेप मैग्नेट, तो मैं आयरन फिलिंग की हेल्प से आपको दिखाऊंगा कि इनके चारों तरफ जब आयरन फिलिंग डाला जाता है तो इनकी भी एक मैग्नेटिक फील्ड आपको यहाँ पे स्क्रीन पर नजर आएगी। सर यहाँ पे बहुत सारे मैग्नेट रखे हुए हैं, इस वजह से। देखिए अब जो दूसरे शेप्स ऑफ मैग्नेट हैं वो अपने मैग्नेटिक फील्ड को कैसे शो करेंगे। ये आप क्या डाल रहे हैं, चूरा सा? ये आयरन फिलिंग है, लोहे का एक चूरा है जो मैं इसके ऊपर डाल। बड़ी अच्छी आउटलाइन बन गई है। ओ ब्यूटीफुल। तो आप देख रहे होंगे जो ये बार मैग्नेट है इसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड बन गई है। और आप ये भी देख रहे होंगे कि जो ये मैग्नेटिक फील्ड है पोल्स पर बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू सेंटर। ये लाइंस ऑफ फोर्स थोड़ा अच्छी तरह दिखा सकते हैं? ओ वंडरफुल, यस। सिमिलरली हमारे पास ये शेप भी है। हम जब स्कूल में पढ़ते थे तो किसी ने ये करके नहीं दिखाया था। Oh, look how beautiful. Just like the textbooks, isn't it? ताली बजाना चाहिए।
इसी प्रकार हमारे पास जो ये मैग्नेट थे जिसको हम परमानेंट मैग्नेट का यूज करके हमने बनाया, इसी प्रकार हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके भी हम मैग्नेट बनाते हैं जिसको इलेक्ट्रोमैग्नेट बोला जाता है। सर आपको अभी बना के दिखाएंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो मैंने एक नेल ली है और नेल के ऊपर एक कॉपर वायर लगा दी। जैसे ही हम उसमें से करंट पास करेंगे तो वो जब कॉइल में से गुजरेगा तो वो अपने चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। तो सर एक बार ये मैग्नेटिक फील्ड जो आप देख रहे होंगे इस नेल पर जो है मेरी पिंस हैं, जो सेफ्टी पिंस है वो भी चिपक रही है, जस्ट बिकॉज क्योंकि इस कॉपर वायर में से करंट गुजर रहा है और करंट गुजरने की चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, जिसकी वजह से ये एक नेल भी एक चुंबक एक मैग्नेट की तरह ही बिहेव कर रही है और इसी को हम इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं। और इन्हीं मैग्नेट्स का यूज करके, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का यूज करके हम डिफरेंट एप्लीकेशन में हम इसका यूज देखते हैं। जैसे सर आपको एक डीसी मोटर बना के दिखाएंगे अभी, तो डीसी मोटर बनाने में भी हम इन मैग्नेट्स का यूज करते हैं। आजकल जो हमारे सेल फोन्स हैं वहां पे भी इसका यूज किया जाता है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहां पर हम अपने मैग्नेट्स का यूज कर रहे हैं। तो आप देख रहे होंगे तो अब आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर एक डीसी मोटर जो हमने मैग्नेट, very primitive DC motor, but then we can all make it. अरे प्लीजिंग, यस, क्या ये मैग्नेट सिर्फ लोहे को ही आकर्षित करता है? नहीं, ये दूसरी चीजों को भी अपनी तरफ आकर्षित करता है। क्या ये पेंसिल को खींच लेगा अपनी तरफ? चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो आपको दिख रहा है कि ये अपनी तरफ नहीं खींच रहा है, लेकिन मैं आपको अभी दिखाता हूँ। तो अभी जो आपने देखा, जो ये हमारे पास मैग्नेट पड़े हुए थे, बार मैग्नेट, यू शेप मैग्नेट, ये एक फॉर्म होती है जिसको हम फेरोमैग्नेट बोलते हैं। सिमिलरली हमारे पास दूसरे फॉर्म्स भी होती है जिसको हम डायमैग्नेट्स बोलते हैं। तो मैं आपको एक एक्टिविटी के माध्यम से दिखाऊंगा। You know, Aman has managed to magnetize some grapes. ये अमन फ्रूट में मैग्नेटिज्म हो सकता है क्या? यस मैम, जरूर होता है। तो दिखाइए, हम देखना चाहेंगे। नहीं, ये कैमरा इन्होंने कर लिया, ऊपर रखो। दिख रहा है, ठीक है। चलिए, This is, you have often been told that for science you have to do painstaking experiments. So this is one of those painstaking. तो ज्यादा पेनफुल मत करना हमारे लिए, चुपचाप बैठ के देखते रहो। ठीक है, तो अभी मैं दिखाता हूँ। तो मेरे पास ये दो फ्रूट्स हैं जिसको मैंने एक पेंडुलम की शेप में यहाँ पे लटका दिया गया है। तो जैसे ही मैं इसके पास यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट लेके जाऊंगा तो आप देखोगे। ठीक है, आप करिए, मैं बोलती रहूँ। जब अमन ने इसके पहले अंगूर को टेबल पे रखा था और स्ट्रॉन्ग वीक तरह तरह के मैग्नेट पास ले गया था, कुछ नहीं हुआ था। लेकिन इस अरेंजमेंट में क्या खास बात है? देयर इज अ फोर्स एंड देयर इज अ मोमेंट ऑफ लॉन्ग आर्म is providing a larger moment. So even with a small amount of force we can move. होने लग गया। Look. He is not touching it, but it is acting as if he is pushing it. Force. अब तक जो है मैग्नेट्स लोहे की कील को अपनी तरफ खींच रहे थे, अब जो है ये इस फ्रूट को रिपेल कर रहे हैं। एंड या प्लीज the magnetic field, there are various substances and all, remember this, your textbooks often say that there are just a few magnetic substances. All substance magnetic response is concerned, that is paramagnetic. Paramagnetic substances, aluminium ball दिखा दो अपना, लाइव एल्यूमिनियम का ऐसा गोला बना, एल्यूमिनियम फॉइल से हमने कोशिश किया था, and this is all attract, it's a magnet, but that effect is again very very weak,
And with this experiment, we could not succeed, so we are not going to try it now. But don't move, remember. So, diamagnetic, paramagnetic, ferromagnetic. 3 kinds of magnetic response in materials. Okay? तो आपका मैग्नेटिज्म खत्म हो गया या अभी ये क्या चीज है? ये क्या है? ये मैम एक सुस्त नलिका है। सुस्त नली, लेजी पाइप। लेजी पाइप है, ये बिल्कुल सुस्त रहता है। अगर आप देखोगे मेरे पास ये 2 सेम दिखने वाले सब्सटेंस हैं। अगर मैं आप इसमें डालूंगा तो आप इसकी स्पीड नोटिस करना, तो ये बिल्कुल फास्टली रोटेट कर रहा है, फास्टली इसके अंदर से मूव कर रहा है। तो जैसे ही मैं स्पेस को डालता हूँ तो आप देखोगे ये तो खो गया, काफी टाइम लगा। फिर से डालना। इसको मैं अगर बाहर से डालूं यही होगा, और इसको भी डालोगे तो ये भी उसी स्पीड से जाएगा। लेकिन जब इसके अंदर से डालते हैं तो ये इसकी स्पीड बिल्कुल रिड्यूस हो जाती है। ये क्यों हुआ? आप में से कोई बताना चाहेगा? क्विज है, टॉफी चॉकलेट मिलेगा। मैग्नेट, उससे क्या होगा? मैग्नेट को, ये है मैग्नेट, इसको हम बाहर से डाल दें तो इसको बाहर से डालें तो उसी स्पीड से जाएगा। लेकिन मैग्नेट को अंदर से डालें और बाहर से डालें, इससे फर्क पड़ेगा। ये देखो चिपक नहीं रहा। ये पाइप जो है, पाइप मैग्नेटिक नहीं है, लोहे की भी नहीं है, फिर भी मैग्नेट को रोकती है, रोकने की कोशिश करती है। वंडरफुल, क्या बात है मैडम, ये तो कमाल हो गई। वेरी कॉमन प्रिंसिपल, एडी करेंट्स। एडी करेंट्स हम हर रोज यूज करते हैं। जैसे सर ने बताया ना कि विज्ञान हमारे हर तरफ है। करंट जो हमारे मीटर होते हैं, घरों में मीटर लगे होते हैं, दोज आर बिल्ट ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ एडी। और भी कुछ है आपके पास? ये हो गया। अच्छा, खिचड़ी पक गई या नहीं? ठीक है, कोई आए? प्लीज आइए। बच्चे, स्कूल के बच्चे भी आ सकते हैं, आ जाओ। के लिए खानी नहीं हैगी। पानी नहीं गर्म हुआ, जरा भी नहीं गर्म हुआ। मैं तो पकौड़े भी नहीं खाते, भी खिचड़ी खानी थी। हाँ। तो आप बताओ, अब आपको बीरबल की याद आ रही है? हाँ जी। हाँ। मैंने इसमें आग तो लेकिन आप लोग साइंटिस्ट हैं तो बताएं कि ये जो मैं आग डाल रहा हूँ वो इतनी नीचे क्यों जा रही है? और कोई एक स्टूडेंट बताएगा कि ये आग कितनी नीचे गई हुई है इसमें देख के? 1 फीट है, 2 फीट है, प्लीज। और बेटा ये 10 फीट बोल रही है। आपको लग रहा है ये गिट्टी 10 फीट की है? और भी है, ये और ही बता रही है। कितना गहरा है बेटा? 1 फीट, ओनली 1 फीट। लाइटा बंद कर दियो। Cannot be measured. Apparent depth cannot be measured. खूब पढ़ता है तुसी स्टेज ते GNDU दे महिबाल जी। आह केंडी खिचड़ी होनी सी घरों लियाउंदा मैं। इतनी डीप आपने अमीठी जलाई है महिपाल जी, फिर भी खिचड़ी नहीं पका सके। Because ये बीरबल की खिचड़ी है, ऐसे ही पकेगी। बीरबल की खिचड़ी है। अब वो क्या चीज बोली, किसी बताएंगे? बीरबल की खिचड़ी क्या चीज है निखिल, बताएंगे आप? क्या बात है, क्या बात है।
ये बीरबल दी खिचड़ी बारे किसने सुना है? कहावत किसने सुनी है? हिंदी च कहते कि बीरबल आए हैं, क्या बात है, 2 लोग हैं यहाँ पे। चलो ड्रामा तो तुहानू हुण दिखाई सी, हुण तुहानू कहानी दसदा मैं, मेरे याद आ गई। एक बार अकबर दे राज दे विच अकबर ने कहा कि हाँ जी ओके, आप पहले बच्चों को भेज दें। हाँ चलो आप प्लीज, थैंक यू सो मच। सो अकबर जी दे राज दे विच एक बड़ी कहानी प्रचलित हुई कि अकबर जी ने राज दे विच हुक्म दिता, कहंदे कि जिहड़ा इंसान ठंड नूं पूरी ठंडी रात दे विच, यस प्लीज, हाँ ओके प्लीज, अरे उसको माइक पे, so please give a big hand to this little child. Magnifier. 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 अच्छा, so okay. मैग्नीफायर एक ग्लास होता है जो जूम करके दिखाता है। अच्छा, वाओ, थैंक यू सो मच फॉर टेलिंग। So we'll come back to you, okay? All right? Thank you. So just keep it there. All right. So यार मेरी कहानी का स्वाद खत्म हो गया। So चलो मैं दोबारा पकाना तुहानू गल दसदा। So बहुत ठंडी रात सी ते अकबर जी ने हुक्म लाता, कहंदे कि जेड़ा इंसान पूरे मेरे साम्राज्य दे विचों इस ठंडी रात दे विच नदी दे विच खड़ के कड्डूगा पूरी रात, उन्हों शाही तोहफे नाल नवाजिया जाओ, शाही खजाना मिलेगा। सो एक बहुत ही गरीब धोबी ने उन्हों का चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया ते जाके वो रात को नदी दे विचाले खड़ा हो गया। पूरी रात वो नदी दे विच खड़ के कड्डी उन्हें ते अगले दिन जो जाके राजा दे अगे पेश होया, अकबर जी दे अगे पेश होया तो कहता कि दो जी मेरा है। तो वो राजा ने बड़ा ही क्यूरियसली पूछा उस तो कि वो की चीज सी जिहड़ी जिन्हें तैनू पूरी रात इस ठंड दे विच नदी दे विच खड़ाई रखिया, की शक्ति सी तेरे कोलों? सो धोबी ने बड़ी इनोसेंटली उन्होंने जवाब दिता कि जड़ा सर तुहाडे महल दे छत दे उपर एक दीवा चल रहा है ना, उहदी लों नूं वेख के मैं पूरी रात ठंड दे विच नदी दे विच खड़ा रहा। तो अकबर जी दे दिमाग दे विच ख्याल आया, वो कहंदे कि इसदा मतलब तू उस लो दी आंच दी गर्मी दे नाल पूरी रात नदी दे विच कट्टी, इस करके तू उस पुरस्कार दा सही हकदार नहीं है। तो भी बड़ा निराश होया ते कुछ करता कुछ सकता नहीं सी बेचारा, तो वापस चला गया। तो वापस जाके बीरबल जी दे अगे पेश हो गया कि मेरे नाल तो एक घटना वापरी है ते मैं पूरी रात नदी दे विच सीगा ते अकबर जी ने मैनू, राजा जी ने मैनू की करता, पुरस्कार नहीं दिता, मेरा बनदा हक नहीं दिता। तो अगले दिन राज दे विच हाहाकार मच गई, बीरबल जी पेश नहीं, उन्हां दे कमेटी दे विच पेश नहीं हुए। ते जदों अकबर जी ने पूछा, कहते बीरबल का जवाब नहीं आया, तो पता लगे है ही नहीं। तो सारे पासे बीरबल जी नूं लभ्या गया, तो एक आप दे सिपाही नूं भेज के उन्हां दे घरे देखा गया भी दसो भाई बीरबल जी कित्थे ने। तो बीरबल जी आपदे घर ही सी ते ओह सिपाही वापस उन्हां दा संदेह लेके, स्नेहा लेके राज दे विच कहंदे जो घरे है ते उन्हां ओह कह रहे ने कि बीरबल जी अज नहीं आउणगे, ओह खिचड़ी बना रहे हैं। अच्छा जी, जिहड़ी खिचड़ी आपां इत्थे बनाई सी। तो राजा बहुत ही, अकबर बहुत ही क्यूरियसली राज दे विचों निकल के ते उन्हां दे घर पहुंच गया। उत्थे जाके की वेखदे है, उत्थे जाके वेखदे ने कि बीरबल जी ने नीचे अग लाई हुई है, जिवें उन्हां वो लड़की ने कहा कि 20 फुट गहरी लगदी जी इहदा अग जिहड़ी लगी है, ऐदां ही नीचे अग ला के उपर मटका टंग रखिया सी जिहदे विच चौल सारा इंग्रीडिएंट्स पा रखे सी खिचड़ी दे। ते जदों राजा पहुंचे उत्थे तो राजा ने पूछा बीरबल आ की कर रहे हैं? कहंदा मैं खिचड़ी बना रहा जी। कहंदा अच्छा किवें? कहंदा देखो तुहाडे सामने। ते उन्हां ने कहंदे कितना टाइम हो गया? खड़े रहे घंटा 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे। कहंदे हुण तां बन गई खिचड़ी, चल चलिए। कहंदा नहीं जी आज देखिए आपां किहड़ी खिचड़ी बनी तो खाइए।
ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਚੌਲ ਉਦਾਂ ਹੀ ਉਦਾਂ ਪਈ ਸੀ, ਕੋਈ ਖਿਚੜੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਤਾਂ ਅਕਬਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਉਦੋਂ ਕਿ ਬੀਰਬਲ ਨੇ ਬੜੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ 10 ਫੁੱਟ ਦੂਰ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਖਿਚੜੀ ਨੂੰ ਪਕਾ ਨਹੀਂ ਸਕੀ, ਖਿਚੜੀ ਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਦਿਆ ਕਿ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਧੋਬੀ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਲੋਹ ਦੀ ਆਂਚ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰਮੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਅਕਬਰ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਾਓ ਉਸ ਧੋਬੀ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਓ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰੋ ਸ਼ਾਹੀ ਤੋਹਫੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਸ਼ਾਹੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹੀ ਕੁਝ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕਨਸੈਪਟ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਓਵਰ ਟੂ ਯੂ ਮੈਮ। Thank you so much for listening. Thank you, Aman. Nikhil. And thank you, Nikhil. Yeah. Now we have Aman just now gave me this tube, and Aman, आप इसको फेंकने क्यों जा रहे थे? मैम ये एक्चुअली खराब हो चुकी थी तो मैंने सोचा अब इसका कोई काम तो है नहीं तो मैं इसको बाहर फेंक देता हूँ, तो इसलिए मैं फेंकने के लिए इसको बाहर ही नहीं, खराब ट्यूब लाओ, मैं जला देती हूँ, मेरे पास मैजिक है। आप जला दोगे इसको? हाँ हाँ बिल्कुल, और अब भी जला के दिखा देती हूँ। एक मिनट मैम, आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे जो मैम हैं ये इलेक्ट्रिक लेडी हैं, समझते हैं ना? हाँ जी, क्या आप मान सकते हो कि मैम बिना कोई वायर लगाए इस ट्यूब को जला के दिखा देंगे आपको? यस और नो? हाँ जी, क्या बिना वायर के जला सकते हैं? बैठ जाओ जुगनू साली। ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो ट्यूबलाइट है लाइट लो जी, लाइट चल लगी, हम तुहानू कुंडी लाउण दी लोड़ नहीं है, ध्यान नाल लिखियो। Plasma globe here, and this is a very nice entertaining toy. You can see that there are strings of light going, hitting the glass. Strings are of blue color, and when they hit the glass you get the red color. So this globe has neon, most probably neon, because the strings are blue, and when it is hitting here, it is coming in, what is hitting? The electrons. They are coming in contact with the air which has nitrogen, and the red color is because of the nitrogen. और देखो इसमें तमाशे कर सकते हैं, कोई खेलना है, कोई बच्चे आ जाओ, अब आ जाओ, ऊपर आ जाओ, आ जाओ, come on, 2-3 बच्चे आ जाओ। So give a big hand to this little guy. आ जाओ, तुम्हें इलेक्ट्रीफाई करेंगे, बिल्कुल इलेक्ट्रीफाई करके छोड़ देंगे। और आइए, करंट लग सकता है उसमें करंट लग सकता है। चलो फिर आ जाओ, हाथ लगाओ इसको, हाथ लगाओ। इसने जैसे इसको हाथ लगाया, ये ढेर सारी स्ट्रिंग्स जो थी एक स्ट्रिंग हो गई। मैं लगाऊंगी, मोटे मोटे स्ट्रिंग हो जाते हैं, और जब हाथ हटा लेते हैं। So why this happens is that the globe at the center is high voltage. It is called a Tesla coil. हाँ, ये भी होना चाहिए, very good experiment. अब लगाओ, करंट लगेगा, देख लेना, करंट लग सकता है। और कोई आइए, आ जाओ, तुम्हारे नाक को भी इलेक्ट्रीफाई करेंगे, ये देखो। Anyone else? मेरा चिप इलेक्ट्रीफाइड है। So this, the basic principle is that of a Tesla coil. It is a Tesla coil, and although the strings are looking very stable, it is not DC, it is carrying AC, high voltage AC. Discharge. आप भी
copy out. And let me show. So, okay, 2 more from some, from senior batch. Yeah, please come on the stage. Thank you. Just 2 people. All right, thank you so much. So we are here. So just think. All right. आराम से. इसके अंदर भी गैस डिस्चार्ज है और इसके अंदर भी गैस डिस्चार्ज है. That is how the discharge is being carried out through this when I bring it close. So whether the tube light is good or not, the gas is inside. As long as there is gas inside, it will carry the current. Touch it. Wow. अच्छा, touch it. बस बहुत है भाई. आपका माइक नहीं मामा, माइक देना. So thank you, children. All right. Thank you. Get back. So the next. बैठ जो जिहड़े हॉल छड़ रहे ने ये चीज़ां ਤੁਹਾਨੂੰ Netflix ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀਆਂ. So please stay present here and just enjoy the science show. अब इसके बाद फिर से मैं अमन कुमार को बुलाऊंगी और ये कुछ मैजिक वाटर के बारे में कुछ करना चाहते हैं. अमन, will you please start? Magic water? Yes, sir. Magic water. Magic water. Haji, please be seated there. चलिए, अभी हम मैजिक वाटर यहाँ पे करने वाले हैं. तो मेरे पास ये 3 डिस्पोजल है. तो आप ही के सामने मैं किसी एक में, तो आपके सामने एक पहेली रहेगी, बूझो तो जाने. तो आपको ये बताना है कि मैंने पानी किस में डाला है. तो आप ही के सामने मैं इसमें डालूंगा पानी. तो मेरे पास 3 डिस्पोजल है यहाँ पे, फर्स्ट, सेकंड, ठीक है, और ये मेरे पास वाटर है. तो वाटर अभी इसमें है. चलिए थोड़ा शफल करते हैं इसको. आप बताइए वाटर किसमें है? सेंटर में है. आप सभी राइट हो. फिर से एक बार शफल करता हूं इसको. आप बताइए वाटर किसमें है? राइट वाले में. आप फिर से सही हो. लास्ट बार फिर से शफल कर रहा हूं. आप बताइए. श्योर हो सभी? ठीक है. इसमें श्योर? तो कोई बता सकता है ये पानी कहां पे गया? बिल्कुल खाली. तो कोई स्टूडेंट बता सकता है ये वाटर कहां पे गया? जम गया? यस यस. जी सर. तो सिंपल मैंने इसमें एक वाटर एब्जॉर्बिंग केमिकल आता है जिसको सोडियम पॉलीएक्रिलाइट के नाम से जाना जाता है. तो वही मैंने इसमें डाल रखा था. तो जैसे ही मैंने इसमें पानी डाला तो उस सोडियम पॉलीएक्रिलाइट ने उस पानी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया. जम गया सर वो उसमें. तो जिसकी वजह से ये पानी आपको यहाँ पे विजिबल नहीं हुआ. इसमें सोडियम पॉलीएक्रिलाइट है.
बच्चों के डाइवर्स में भी हम इसका यूज करते हैं. Yes, that's why he's right. हाँ, बिल्कुल. दीजिए सर. हो गया? Yes, sir. हो गया सर. अच्छा. हमको सबको पता है कि ये बॉल अगर इस हाइट से moving upward, small body is going down and colliding with it. आप ऊपर ही आ जाओ मेरे पास. Let me please finish. Come on. So, how does it push? Nothing mysterious about it, nothing magical about it. Conservation of energy and momentum. Momentum is distributed in such a way that the large body gives a large amount of momentum to the small body and it bounces high. Okay? Now, हमारे लिए तो ये खेल है, बहुत अच्छा लगता है. In fact, 2 के बजाय अगर 3 बॉल रखते हैं ना, बड़ा फिर उससे छोटा फिर बहुत छोटा, तो तीसरा बॉल पता नहीं कहाँ चला जाता. ये आप करके देख सकते हैं. लेकिन इस समय मैं ये बताना चाह रही हूँ कि खेल सर अब सुबह बात कर रहे थे ना, it is all here. इस खेल तमाशे की मदद से, इस प्रिंसिपल की मदद से हम रॉकेट लॉन्च करते हैं. Not exactly launch, but when a satellite is moving around the earth, whenever the satellite is coming in this direction, whereas the earth is going in this direction, as it completes the rotation about the earth, it picks up more momentum from the earth. Earth को कोई फर्क नहीं पड़ता, इतनी large body. लेकिन वो जो छोटा सा सैटेलाइट है, वो एनर्जी गेन करता है. इसी तरह से यही चीज अगर आप कई बार करवाएं तो बहुत ज़्यादा एनर्जी गेन करता है. And now you tell me, this is a quiz. Where has this been used recently? Mars orbital mission का नाम सुना है ना? हमारा था, India. और if you remember, मोदी जी came on TV to say, हॉलीवुड की मूवी से कम पैसा लगा है. कैसे लगा? क्योंकि हमारा दिमाग लगा है. और दिमाग लगा के हमने बजाय फ्यूल खर्च करने के इस तरह से हमने लगा लिया. तो अब so before we say goodbye, Aman will show you some. He has written some. He's got some messages. अमन को कुछ मैसेजेस मिले हैं, पर अनफॉर्चुनेटली वो हिडन मैसेजेस हैं. तो अमन हम क्या कैसे तो करवाया, हमने आप लोगों को करवाई है. तो किसी ने मुझे कहाँ क्या लिखा है, तो उसको देखने के लिए also, thank you. Over to you. Thank you, Dr. Dia and team, for this memorable, different and a fun magic show. Now I request Dr. Aman sir to kindly come to the stage and offer a memento to our worthy Dr. Kia for her significant contributions in the field of science and technology. Dr. Kia, I request you to please come over the stage.
Ma'am Kia to please invite your team so that we can offer some souvenirs to your team. I invite Dr. Aman sir for the same. Thank you, Dr. Kia. I request the audience to please return a mic if they have. Thank you. Now today, we also have a dignified rocket scientist with us. Yes, you heard right. He is none other than Dr. Harjeet Singh. Dr. Harjeet is an aerospace structural design specialist at Indian Space Research Organization, ISRO. He has 12 plus years of experience in design, finite element analysis and testing of aerospace structures. He is also a public speaker who likes to talk about rocketry and rocket science. It is an absolute pleasure to have you, sir. Now I request you to please come to the podium for an interactive session with our esteemed audience. लाइट्स बंद हो चुकी हैं वाली ब्लाइंडिंग मेरी सो गुड इवनिंग टू ऑल द respected dignitaries and faculty, students. मॉर्निंग के 3 सैशन हो गए, 3 या 4 इंग्लिश हो गया, लास्ट वाला हिंदी सी। सो ये वाली लैंग्वेज केड़ी रखी है? श्योर पंजाबी रखनी है? ठीक है, ये वाला आप पंजाबी जी रखांगे। तो मेरी स्पीच इन्नी कोई वड्डी नहीं है, बहुत छोटी स्पीच तैयार की क्योंकि मैनू आइडिया सी कि आप इंटरैक्ट ज़्यादा करांगे। बहुत तुसीं गल्लां सुन लियां ते मैं हले एडा वड्डा नहीं होया कि मैं तुहानूं उपदेश दे सकां या गल्लां सुना सकां। सो ज़्यादा से ज़्यादा इंटरैक्ट करने की कोशिश करांगे। तुहाडे जो भी सवाल होणगे तुसीं पुछ सकदे हो मैनूं, मैं जिन्ना हो सकेगा मैं तुहानूं जवाब देने की कोशिश करांगा, ठीक है? ते जदों मैनूं मैडम ने भेजा सी ਇਹਦਾ ब्राउशर, ਇਹਦਾ नाम प्रोग्राम ਦਾ विज्ञान सर्वत्र पूज्यते। मैं मतलब जो इंग्लिश देखी तो ये कहना कि साइंस इज रेवर्ड एवरीवेयर, मतलब विज्ञान है ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੀ हर कोई सत्कार करता, हर जगह ਤੇ ਉਹਨੂੰ सत्कार मिलता है, ठीक? तो ਉਹਦਾ कारण की है कि विज्ञान की तरक्की ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ आर्थिक तरक्की है वो दोनों नाल चलते हैं। तुसी कोई भी फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री देख लो, सैकेंड वर्ल्ड कंट्री देख लो, उन्होंने जो 20th सेंचुरी की शुरुआत हुई है उन्होंने बहुत हैवीली इन्वेस्ट किया साइंस दे विच।
ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਲਡ ਵਾਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਟਰਨ ਮਿਲਿਆ। ਉਹ ਉਸ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਰਿਟਰਨ ਮਿਲਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਫਸਟ ਵਰਲਡ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਆ, ਉਹ ਹੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੀ ਖੱਟੀ ਉਹ ਅੱਜ ਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ। ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਇਸ ਕੰਮ ਥੋੜਾ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਆ ਵਾਸ ਨਾਟ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ, ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਜਦੋਂ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸਰੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, IIT ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ, CSIR ਹੋ ਗਈ, TIFR ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟਸ ਬਣਾਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਹੈ ਇਸਰੋ, ਇੰਡੀਅਨ ਸਪੇਸ ਰਿਸਰਚ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, 1963 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਮੇਰਾ ਜੌਬ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਟ੍ਰਿਵੇਂਡਰਮ, ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਲਾਸਟ ਸਟੇਟ ਹੈ ਕੇਰਲਾ, ਉਹਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈ ਟ੍ਰਿਵੇਂਡਰਮ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਸਟਾਰ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਖੈਰ ਚਲੋ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਾਈਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇੱਧਰ? ਹਾਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਰਾਕਟ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਜਾਂ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਵੱਡਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਨਾਟ ਫॉर द ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਸ, ਓਨਲੀ ਅਪ ਟੂ 8th 10th ਤੱਕ ਦੇ ਜਵਾਬ ਚਾਹੀਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਇਮੇਜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਦੱਸ ਸਕਦਾ? Just raise your hands if you want to say. अपने हथ खड़े कर सकते हो। थोड़े दिमाग में साइंटिस्ट की इमेज कितना दी होती है? कोई भी बोल सकता, कोई दिक्कत नहीं है। वो छोटू कितने गया अपना? ऊपर होना है। कम अच्छा, ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਤੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਇਮੇਜ ਆਉਂਦੀ ਦਿਮਾਗ 'ਚ? ਇਮੇਜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਬਣਾਵਾਂ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ ਗੱਲ। ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦੀ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਦੀ? ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਨਾਰਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਾਈਟ ਸੂਟ ਪਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਛੋਟੇ ਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। हाँ, अब्दुल कलाम तो बहुत बड़े बड़े वाल थे। यस। हाँ, फिर तुम छोटे कितना कहते? नहीं लगा। सारे ने बड़े छोटे। चलो गुड। आइंस्टाइन दे सी, फिर उस तो बाद अपना मैक्सवेल दे वाल देखे तो भी खड़े वाल थे, एकदम स्पाइक सी। हाँ, तो फिर चलो थैंक यू। ਤੇ ਖੈਰ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਜਨਰਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਦੀ ਇਮੇਜ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਨਰਲੀ ਇੱਕ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਅਨ ਬੰਦੇ ਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਰਾਮਾਸਵਾਮੀ ਹੋਏਗਾ, ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦਾ। ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਖੈਰ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 2007 ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਲੋਕ ਸ਼ਕਲ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਅਨ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਬਟ ਗੈਟਅਪ ਉਹਦਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾਰਮਲ ਦਿਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜੋ ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਉੱਥੇ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਈਵਨ ਕਾਮਨ ਲੋਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਮਤਲਬ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਇੰਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ 8th ਜਾਂ 10th ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੈਰੀਅਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਤਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ। ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਐਟਲੀਸਟ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੈਟਰ ਹੋਇਆ ਹੋਏਗਾ, ਬਟ ਮੈਂ 2007 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਿਹਾ ਲਗਾਤਾਰ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਅਨ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਮੇਜ ਹੈ ਉਹ ਜਨਰਲੀ ਨੱਚੇ ਟੱਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਅਸੀਂ ਨੱਚਦੇ ਟੱਪਦੇ ਹਾਂ, ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਲੜਾਕੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਲੋਕ। ਈਵਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਘਰ ਲੈਣ ਗਿਆ ਸੀ ਰੈਂਟ ਤੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਲੜਾਈ ਕਰੇਗਾ।
नो दिस इज मतलब सच्ची मैं कहता हुआ खैर चलो तो ये कुछ हद तक सच्चाई भी है कि असी लोग थोड़े ज़्यादा गर्म ख्याली होंगे हैं तो उसका रीजन भी है कि असी साड़ी जी मतलब भूगोलिक स्थिति सी जियोग्राफिकल लोकेशन सी वो डिमांड करती सी हर टाइम उपरों नॉर्थ साइड तो हमलावर आते सी तो उन्होंने रोकने वास्ते साड़ी सानू इदा का बनना पैंदा सी ते उदा दे बने भी ठीक है ना तो इस सब के बावजूद मतलब ये देख लो कि ईवन आफ्टर इंडिपेंडेंस तो बाद सानू 1947 का जिहड़ा संताप है भोगना पिया फिर सानू दो वड्डियां जंगां होईयां 1965 1971 वो पंजाब ने अपनी पिंड ते हनाईयां तो उस तो बाद 90s का जिहड़ा दौर सी वो होया पंजाब दे विच 75 सालों के विच 4 वड्डे इवेंट हो गए पंजाब दे लई उस दे बावजूद पंजाब ने वर्ल्ड लैवल के साइंटिस्ट पैदा किए हैं ये नहीं कि नहीं किए पंजाब ने साइंस में कोई काम नहीं किया जनरली पंजाब के लोगों की इमेज ले ली जाती यार छड्ड असीं कित्थे साइंस के पासे साडा तां मतलब साइंस कोई हुंदा ही नहीं बट ये सही नहीं है पंजाब ने बहुत वर्ल्ड लैवल के साइंटिस्ट पैदा किए हैं तो थोड़े जो मैनू कोई 4 या 2 या 3 साइंटिस्ट के नाम दस सकता पंजाब के जिहड़े वर्ल्ड लैवल के साइंटिस्ट होण बच्चों च किन्नू पता है एक का नाम भी नहीं पता एक तो सवेरे दुआ सर दस के गए सी नाम उन्होंने हाँ हरगोबिंद खुराना एक सी होर एक कारण है जदों साउथ इंडियन सानू नचिंदा पुराने कहते हैं असं डिफेंड नहीं कर सकते क्योंकि सानू अपने लोगों का खुद नहीं पता होना जरूरी है मैं थोनू सिर्फ 5 लोगों के नाम दसने 5 वर्ल्ड लैवल के साइंटिस्ट जिहड़े पंजाब के होए हैं ठीक है होर भी कई है पर मैं 5 मेन लोगों के नाम लैके सोच के आया सी मैनू आए थे घट्टो घट्ट 2-3 लोगों के नाम तुहानू पता होणगे चलो खैर अच्छा इंडिया के विचों या कला एस्ट्रोनॉट कौन सी हाँ राकेश शर्मा कितों दे सी ये प्रॉब्लम है सानू जानकारी रखनी पड़ेगी राकेश शर्मा पटियाले दे सर पटियाले दे इंडिया का एको एक एस्ट्रोनॉट होया अज तक तो वो पंजाब का होया सानू ये जानकारी होनी चाहिए ठीक उस तो बाद सब आप क्रोनोलॉजिकली चलांगे सब तो पहला पुराने अनवंडे पंजाब दे विच एक बहुत मशहूर साइंटिस्ट होए है पर जिन्ने मशहूर सी उन्ने घट लोगों को उन्होंने बारे पता है उन्होंने नाम सी डॉक्टर रुचि राम सानी सर को पता होगा ही वॉज वेरी फेमस पर्सन जिन्ना उन्होंने साइंस को पॉपुलराइज करने वास्ते काम किया है वो किसी होर ने नहीं किया होना अज तक तो वो इन्ने मतलब 1883 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਇਸਮਾइल खान है ਉੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ अर्नेस्ट रदरफोर्ड नाल काम किया 2 पेपर उन्होंने नाल कोलैबोरेट करके पब्लिश किए हैं रदरफोर्ड का नाम सारे को पता है किहड़े काम वास्ते फेमस है वो गोल्डफॉयल एक्सपेरीमेंट है उन्होंने न्यूक्लीयर साइंस के फादर कहा जाता है उन्होंने प्रोटॉन की खोज की सी उन्होंने एटम के न्यूक्लियस की खोज की सी ते रुचि राम सानी ने उन्होंने कोलैब किया उन्होंने नाल सेम लैब के काम किया होया 2 पेपर उन्होंने कोलैबोरेशन करके कढ़े है तो फिर उन्होंने नील्स बोर नाल भी काम किया उस टाइम तो उस तो बाद वो पंजाब वापस आए उन्होंने लग्या कि लोगों के साइंटिफिक टैंपर फैलाना चाहिए लोगों के साइंटिफिक नॉलेज होनी चाहिए उन्होंने फिर साइंस को पॉपुलराइज करने वास्ते बहुत ज़्यादा काम किया ईवन जे तुसी अजकल तुहानू पता होगा नील डीग्रास टाइसन सारे पता है उस तो भी वध नील डीग्रास टाइसन उन्होंने सामने कुछ नहीं उन्होंने काम इन्ना ज़्यादा उन्होंने काम किया है बट अनफॉर्चुनेटली सानू पता नहीं होंदा ज़्यादा उन्होंने बारे उन्होंने ही बेटे बीरबल सानी रहे हैं जो कि बहुत फेमस पुरातत्व जीव विज्ञानी सीगे वो भी अपने फील्ड के बहुत मन्ने परमन्ने साइंटिस्ट रहे हैं वो भी पंजाबी सी खैर चलो दूसरे हरगोबिंद खुराना
इंडिया दे विच एक सब तो पहला सीवी रमन नूं मिलिया सी नोबल प्राइज़, दूसरे नंबर ते हरगोबिंद खुराना नूं मिलिया सी। हरगोबिंद खुराना मुल्तान दे विच पैदा होए सी, अणवंडे पंजाब च, पंजाबी है। ना ही सिर्फ वो मतलब वो एक बेसिकली वो भी बॉटनिस्ट सी, जीव विज्ञानी सीगे ते उन्हां दे नाम ते यूनीवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन दे विच प्रोग्राम भी चलदा है। ही इज़ द वन ऑफ द मतलब बेस्ट साइंटिस्ट इन वर्ल्ड इन हिज फील्ड एटलीस्ट। हरगोबिंद खुराना दो हो गए। तीसरा, अच्छा इंटरनेट चलाउने हो सारे जाने। इंटरनेट नूं चलाउण वास्ते जिहड़ी केबल यूज की जाती है वो ऑप्टिकल फाइबर है। ऑप्टिकल फाइबर का इन्वेंटर कौन सी? यस, डॉक्टर नरेंद्र सिंह कपानी, फादर ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स। ही वॉज ए पंजाबी बॉर्न इन मोगा, पंजाब। मेरा शहर मोगा, उन्होंने भी शहर मोगा ही है। तो अनफॉर्चुनेटली बहुत पता होंगे कि वो भी पंजाबी सी, जिहदे करके तुहाडा इंटरनेट चलता है। वो एक छोटे जी मतलब की कह लो अनफॉर्चुनेट इंसीडेंट करके उन्होंने नोबल प्राइज़ रह गया, अदरवाइज उन्होंने फाइबर ऑप्टिक्स की इन्वेंशन वास्ते नोबल मिलना आलमोस्ट श्योर सी, बट स्टिल ही इज़ रिगार्डेड एज फादर ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स। तो उस तो इलावा भी उन्होंने मतलब वो बहुत एंटरप्रेन्योर टाइप भी सी, 3 कंपनियां भी उन्होंने खड़ियां कीतियां ते बहुत कलैक्शनस भी कलैक्टर सी बहुत वधिया, उन्होंने कोल बहुत अच्छी कलैक्शनस भी सीगियां। ते उस तो बाद एक रुचिराम सानी दे डिसाइपल चेले सन, उन्होंने स्टूडेंट रहे हैं, डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर, द फादर ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूट्स इन इंडिया। उन्होंने आके इंडिया दे विच एक्सपैरीमेंटल साइंस शुरू की। CSIR का नाम सुने? CSIR एक सेंटर फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इंस्टीट्यूट है, बहुत वधिया, बहुत आला किस्म की रिसर्च होंगी उत्थे। वो ये फाउंडिंग फादर रहे हैं। शांति स्वरूप भटनागर है, तुसीं इन्हां वाले पढ़ लेना, होर भी उन्होंने बहुत अच्छे खोज हैं, वो भी पंजाब दे सन। तो एक होर मैं तुहानूं दसूंगा, डॉक्टर गुरतेज सिंह संधू, रहिंदे इंग्लैंड च है, पंजाब दे। उन्होंने टोटल हुण तक 1389 पेटेंट अपने नाम से करवाए हैं। यह एडिसन तो भी वध है, एडिसन के 1099 सी, 1089 सीगियां ते इन्होंने उस तो भी ज़्यादा इन्वेंशनस कीतियां। ये दुनिया के विच इस टाइम 7वें सब तो वड्डे इन्वेंटर है, इन वर्ल्ड लेवल 7th वो है। ठीक, यस सर। थैंक यू फॉर द इन्फॉर्मेशन। थैंक यू। तो ये मैं कुछ नाम दसे है जेडे मेन सी। इस तो अलावा कई होर नाम भी हैं, जिमें डॉक्टर सतीश धवन सी जेडे कि इसरो के 2nd चेयरमैन रह चुके हैं, वो भी बहुत अच्छे फिजिसिस्ट सीगे। तो ईवन जे तुसीं पता होवे तां जेडे सुब्रमण्यम चंद्रशेखर लिमिट जिन्हां ने दित्ती है, वो भी बॉर्न एंड ब्रॉट अप पंजाब दे सी। चाहे वो पंजाब दे नहीं सन, वो सीवी रमन के भतीजे सी बेसिकली, पर वो बॉर्न एंड ब्रॉट अप पंजाब दे सीगे। उन्हें सारी पढ़ाई लिखाई इत्थे हुई है। तो हुण सोचने वाली गल ये है कि ये सारे जो लोग सी, इन्हां कोल जिहड़ियां फैसिलिटियां अज साडे कोल वो नहीं सी। जिवें मैडम ने पहलां दस्सिया कि 84 दे विच उदों इन्हां नूं ब्रैड खुद लैके जानी पैंदी सीगी, जां जो मतलब की कहंदे आ एक्सपैरीमेंट करन वास्ते, जां दुआ सर ने दस्सिया सी उदों। तो ये सारा कुछ हुंदे होए भी वो अपनी फील्ड दे विच टॉप ते पहुंच सके। तो साडे कोल सारा कुछ है इस टाइम, साडे कोल इंस्टीट्यूट्स है, साडे कोल फैसिलिटीज़ है, साडे कोल इंटरनेट है। उस टाइम उन्होंने जो कोई चीज़ सीखनी होंगी तो लाइब्रेरी के मत्थे मारने पैंदे, लाइब्रेरी जरूरी नहीं है कि बुक मिले या ना मिले।
ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ 'ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਰੋਕ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਇੰਸ ਨੂੰ ਪਰਸ਼ੂ ਕਰਨ ਤੋਂ? ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਵਿਲ ਪਾਵਰ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ there is nothing stopping you. There is only one thing stopping you, that is you. ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਹੋ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਇੰਸ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਇੰਨਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਟੌਪਿਕ ਕਿ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਇੰਸ ਫੀਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਇੰਸ ਮਤਲਬ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਇੰਸ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਐਡੀ ਕਰੰਟਸ ਵਾਲਾ। ਮੈਮ ਨੇ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੱਸੀ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਐਡੀ ਕਰੰਟਸ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕੁਝ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਐਨੀ ਆਈਡੀਆ? ਐਡੀ ਕਰੰਟਸ ਬ੍ਰੇਕਸ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ, ਬਟ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬ੍ਰੇਕਸ ਹੈ ਉਹ ਐਡੀ ਕਰੰਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਐਡੀ ਕਰੰਟਸ ਦੀ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਹੈ। ਸਾਈਕਲ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਈਕਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਘੁੰਮਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਪਈਆ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਹੀ ਰੁਕਦਾ ਉਹ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿਉਂ? ਇਹ ਕਿਉਂ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਲਿਆਉਣੀ ਪਏਗੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਰ ਚੀਜ਼, ਜਿਵੇਂ ਮਾਰਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਆ ਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਾਇੰਸ ਇਜ਼ ਵਟ, ਹਾਊ, ਵਾਈ। ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੀ ਹੈਪਨਿੰਗ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਸਿਰਫ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਦਦ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਮਦਦ ਕਰਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਗਲੋਬਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਇਫੈਕਟ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਈਨਸਟਾਈਨ ਨੇ ਰਿਲੇਟੀਵਿਟੀ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਡੀਸਨ ਨੇ ਬਲਬ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਨਿਊਟਨ ਨੇ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੋਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਖੋਜਾਂ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਦੇ ਯੂਜ਼ 'ਚ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਰਹੀਆਂ। ਤੋ ਸਾਇੰਸ, ਜਿਵੇਂ ਮਾਰਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਆ ਸਰ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਸਾਇੰਸ ਕਨੈਕਟਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕਰੋਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਕਰੋਗੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ ਜੈਕ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਹਾਲਾਤ ਸੇਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੇਮ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਐਸਟਰੋਫਿਜ਼ਿਕਸ ਵੱਲ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਾਸਮਿਕ ਸਕੇਲ 'ਤੇ ਕਿੱਡੇ ਕੁ ਵੱਡੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਸੀਅਤ ਹੈ ਜਾਂ ਹਸਤੀ ਹੈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯੂ ਆਰ ਨਾਟ ਈਵਨ ਮੋਰ ਦੈਨ ਇੱਕ ਧੂੜ ਦੇ ਕਣ ਤੋਂ ਵੀ ਛੋਟੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਈਵਨ ਜਸਟ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਮਿਲਕੀ ਵੇ ਨੂੰ ਹੀ ਲੈ ਲਓ, ਇੱਕ ਮਿਲਕੀ ਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਧਰਤੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਿਲਕੀ ਵੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਵਾਲਾ। ਐਡੀ ਛੋਟੀ ਸਾਡੀ ਹਸਤੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਐਡੀ ਛੋਟੀ ਹਸਤੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗਰਜਿਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਆਕੜਾ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਦੇਖਣ ਲੱਗਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਇੰਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਦੇ ਹੋ, ਐਸਟਰੋਨੋਮੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀਆਂ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਏ ਪਰਸਨ ਗਰੋ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਇੰਸ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਖੈਰ ਚਲੋ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਹ ਇਹੀ ਰਹੂਗੀ ਕਿ ਹੁਣੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੈਰੀਅਰ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਫੀਲਡ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਰਿਸਰਚ ਕਰੋ, ਕਿੱਦਾਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਹੜੇ ਫੀਲਡ 'ਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿੱਦਾਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਹੜੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਅੱਛਾ, ਕਿਹੜੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਨ ਦਾ ਐਂਡ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਈ ਐਮ ਅਵੇਲੇਬਲ ਟੂ ਆਨਸਰ। ਕੋਈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਰॉकेट ਸਾਇੰਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਐਸਚਨ ਉਹ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੈਰੀਅਰ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣਾ ਉਹ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ।
Respected sir, my question is that what we do study in astrophysics? Can you repeat it? What do we study in astrophysics? Astrophysics, देखो ये दिया है सब तो पहला था. Cosmology is about studying the different objects in the universe. मतलब जिमें planets है, planets तो ऊपर stars है, फिर उसके ऊपर थोड़ी galaxies आ गई हैं. ये Good morning, sir. Good morning. Sir, my question is that how ISRO supports astrophysicists in India? ISRO in particular does not support, it supports in another way. ISRO basically is engineering. ISRO is not astrology or astrophysics. Okay? ISRO is about making the rockets. ISRO is about making the satellites. If you want to work in physics or like you want to work in pure sciences, don't come to ISRO. You have to go to different institutes like PRL, Physics Research Laboratory is there. Okay, then you have SPL, Space Physics Laboratory. Then you have TIFR, Tata Institute of Fundamental Research. इधर इंस्टीट्यूट है ਜਿਹੜੇ प्योर साइंसिस च काम करते. ISRO ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟਸ ਹੈ ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਡਾਟਾ ਕਲੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈ. ਸੋ ਇਹ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਲੇਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਰਬਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਸੋ ISRO will make arrangements, the logistics ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਰਾਕਟ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਰਾਕਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਆਰਬਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ. ਇਹ ISRO ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ. ਉਹ ਡਾਟਾ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਜਿਹੜਾ ਕਸਟਮਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦੇਗੀ, ਫਿਰ ਡਾਟਾ ਕਸਟਮਰ ਯੂਜ਼ ਕਰੇਗਾ. ਸੋ ISRO is engineering, more about engineering. But if you want to come to ISRO, there are 3 ways. ISRO हर साल अपना टेस्ट कर रही है, ICRB कहते हैं ISRO सेंट्रलाइज्ड रिक्रूटमेंट बोर्ड. ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ BTech ਤੋਂ ਬਾਅਦ BTech ਮੋਸਟਲੀ ਮਕੈਨੀਕਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਐਂਡ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ, ਇਹਦੇ 3 ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦਾ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਇਫ ਯੂ ਗੈਟ ਸਿਲੈਕਟਡ ਯੂ ਕਮ ਦੇਅਰ. ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਸਟ ਪਲੱਸ 2 ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਰ ਇਜ਼ ISRO ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਹੈ IIST, ਉਹ ਟ੍ਰਾਈਡਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ. ਉਹ IIT JEE ਦੇ ਥਰੂ ਬੱਚੇ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਫ੍ਰੀ ਹੈ, 4 ਸਾਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਫ੍ਰੀ ਹੈ. ਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਮਿਨੀਮਮ CGPA ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ISRO ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਬਜ਼ੌਰਬ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ. ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਐਰੋਸਪੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਜਾਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਾਇੰਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਗਰੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ. ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ M.Tech ਜਾਂ PhD ਲੈਵਲ ਬੇਸ ਤੇ ਵੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਡਿਮਾਂਡ ਬੇਸਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. Thank you so much, sir. Sir, I have another question. Yeah. That like मॉम का ISRO ने जो शेयर किया था सिटीजन्स के साथ, तो how we immature astrophysicist can assess that? No, I didn't get it. Sir, मॉम का जो है शेयर किया था like ISSDC साइट पे, तो how we can access that data? I'm not very sure about that actually. I do come from the engineering side of it. What I know, there is a site by ISRO, Bhuvan, yes, if you know. Yes, sir. उस पे काफ़ी सारा डाटा है, मतलब जो IRS satellites का सारा डाटा है, that is available there. That can be used by anybody free of cost, and people can develop their own applications out of it. And sir, जो टेलीस्कोप से डाटा ISRO कलेक्ट करता है, then can't even we do work on that also? I'll have to ask. You can connect with me later. I can help you on that. Sure, sir. Thank you so much, sir. Thank you. Good afternoon, sir. Good afternoon. सर आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा सर. Thank you. सर मेरा बस एक क्वेश्चन है सर. सर आपकी जो एंटायर जर्नी रही सर, जहाँ पे आप इस टाइम है सर, तो सर थ्रू आउट जर्नी सर इंसान के साथ कभी सर इतनी स्ट्रगल्स आती है सर कि सर आप कैसे मोटिवेट रहे सर अपने गोल की तरफ थ्रू आउट योर एंटायर जर्नी. सर आपके पास बहुत सारी डिफिकल्टीज आई होंगी सर, तो सर उसमें आप कैसे कोप करते थे सर? टू बी ऑनेस्ट, झूठ नहीं बोला मैंने कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं आई. my journey was pretty easy. मेरा इंजीनियरिंग खत्म होंदे ही I got into ISRO, and
Yes, but then again, while being in ISRO, there were the moments on this like you designed something, now you are going to test it. That's an anxious moment. You don't know it's going to work or not. तुसी सिर्फ कैलकुलेशंस कीतियां या अपना एनालिसिस कीता जो भी कीता है तुसी डिजाइन कीता तुसी क्या है कि 2 mm थिकनेस है एनफ है बट नाउ यू डोंट नो कि रियलिटी जाके उत्थे की होएगा. Those are the anxious moments. Only thing what you can do there is believe in yourself. अपना जो भी तुसी होमवर्क कीता ओनु चेक दोबारा करो. Make sure you have not done any mistake and then be confident in your calculations or your work you have done. That's all. Thank you so much. Thank you. Good afternoon. And getting to ask that for to qualify the program. So I the of the gate Depends upon person to person. Like मेरा I had it's clear. The issue they want thank you, sir. Sir, one last question: that from where did you have completed your BTech? Do you know the government engineering college of India? Yeah, I think it's Maharaja Ranjit Singh. Yeah, now it is Maharaja Ranjit Singh University. At our time, it was Gndu Singh College of Engineering and Technology. Yeah. Thank you, sir. Thank you. Anybody else? Thank you for the wonderful session. Thank you. Thanks a lot, sir, for your words of wisdom. It was definitely a privilege listening to you. I invite Sir Dharamveer to come on the stage and please extend a token of gratitude to Dr. Harjeet. By the way, it's just Mr. Harjeet. It's not doctor yet. Sorry. आपका बहुत अच्छा ओवरव्यू था कैरियर ऑप्शंस में और पॉसिबिलिटीज में. मैं दो चीज़ें आप बच्चों से दो लाइनें कहना चाहता हूँ. अमूमन ये देखा जाता है कि आप टेक्स्ट बुक्स नहीं भी इस्तेमाल करते. 11वीं 12वीं में जो बच्चे होते हैं जो एनसीईआरटी की किताबें बहुत अच्छी लिखी हुई लेकिन उसको इस्तेमाल नहीं करते, ना टीचर्स स्टूडेंट्स करते हैं. टेक्स्ट बुक का मतलब है वो किताब जो माइंड को टेक्स्ट करे और समझे. जब तक कि आप अगर आपसे ये पूछा जाए कि आपको फलाने सेक्टर में इस मकान में जाना है तो आपको पता होगा कि उसका एक सीरियल नंबर्स होते हैं सेक्टर्स के, एंट्री एग्जिट होता है. अभी आप क्या करते हैं, जीपीएस लगाते हैं, आपको दाएं बाएं वो बताता जाता है, मैकेनिकली आप काम करते हो लेकिन उसकी लोकेशन उसकी डायरेक्शन आपके माइंड में नहीं होती. इसी तरह से किताबों में अगर टेक्स्ट बुक्स पे नहीं करेंगे उसके साथ जो सवाल है वो तो आप उस सब्जेक्ट को समझ नहीं सकते. जब तक अटकेंगे नहीं तो बारीकियां नहीं समझोगे. So I would request every student to give
to do justice to the textbooks, not to the grip of the help books. और खुद सवाल करें. और मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सबके एक्सपेरिमेंट्स कुछ ना कुछ दैनिक जीवन से जुड़े हुए होते हैं. So try to learn by doing and not with the help of the keys that help us. That's all I just want to say. थैंक यू सो मच सर. आज हमारे बीच में प्रस्तुत अध्यापकगण, विद्यार्थीगण एवं अन्य श्रोतागण, आप सभी को ये बताते हुए मुझे बेहद खुशी एवं गर्व महसूस हुआ कि आज हमारे बीच कुछ ऐसे वक्ता हुए जिनका जीवन खुद में हमारे लिए एक मिसाल है, जिन्होंने अपने जीवन में कठिन परिश्रम एवं मेहनत से ऐसे मुकाम हासिल किए कि उन्होंने खुद के लिए तो सफलता हासिल की, लेकिन उन्होंने औरों को भी एक नया दृष्टिकोण दिया. तो सर, मैम, आप सभी का गुरु नानक देव विश्वविद्यालय की तरफ से मैं हार्दिक आभार प्रकट करना चाहूंगा कि आपने आज हमें अपना मूल्यवान समय दिया और हमारे साथ इस इवेंट में प्रस्तुत हुए. खास आभार प्रकट करना चाहूंगा मैं हमारे डॉक्टर विंध्या अरोड़ा जी का, जिनके नेतृत्व में हम विद्यार्थियों को भी ऐसा अवसर प्रदान हुआ कि हम इस इवेंट का एक अभिन्न अंग बन पाए. तो ऐसे गुरुओं को, ऐसे शिक्षकों को के लिए एक कविता प्रस्तुत करना चाहूंगा मैं, जिसका शीर्षक है कर्तव्य. इसका तात्पर्य है कि जो इंसान अपने फिर हार क्या, फिर जीत क्या, फिर हार. Thank you, Sanindra, for this very beautiful poem. As Sir APJ Abdul Kalam once said, dream, dream, dream. Dream transform into thoughts and thoughts result into action. Our students and all, let's think about this phrase to absorb its real meaning. With this, we are taking a break from you all for the lunch, which will be served in the hall downstairs. I request all the organizers to accompany our dignitaries. School students and teachers can come to the hall for lunch after 15 minutes. Again at 3 p.m. sharp for our special movie screening. Thank you. We will meet here again at 2. All the other audience, like they can see the poster presentation now, they can see the Vigyan Sarvatra now, and the lunch is only for the school students, for the accompanying teachers and colleges who have like participated and registered, who have these ID cards. All the audience can see the science exposition outside and the movie exposition. Thank you. मैं अपने हिसाब से ले लूँगा रोटी, मुझे रोटी चाहिए और तो लेके बस दूध चाहिए. To commemorate the 75th year of independence of our
So in my talk, I will focus on the various processes played by the Indian Meteorological Department post-independence, how we have actually gone through right from our modest beginning 1875 till now. So once again, I thank you, all of you, for giving me the opportunity, and I would like to now speak in Punjabi so that our audience really take to it, and in between I will speak in English also. So with this, I would like to start my presentation also. This is basically how we have gone through the various levels, right from our beginning since the inception of our department, and now we have actually gone through, and our department is at par with the many other leading meteorological nations of the world. So I would like to share my presentation also with you. So my presentation is visible to all of you. Hello. Yes, sir. Okay. So as you शुरू करूँगे, basically the idea of this lecture is to go into the insight कि कितना सारा department में रहेगा, independence के बाद कितना meteorological science में develop हुए सारे speech. अगर तो सी मेट्रोलॉजिकल साइंस की गल करिए तो बहुत पहला मेट्रोलॉजिकल साइंस सानू पता सीगा एशियन टाइम की बहुत जिक्र रहेगा। ਆਪਾਂ अगर पुरानी गल करिए तो 1000 BC ਤੇ 500 AD ਦੀ ਵੀ मेट्रोलॉजिकल साइंस ਦਾ सानू पता सीगा, और ਸਾਨੂੰ ਇਹ पता सीगा कि कितना मेट्रोलॉजिकल साइंस एटमॉस्फेयर साइंस इंपॉर्टेंट है। और ਜਿਹੜੇ ਪਤੀਲਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ इंस्टीट्यूट्स है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਸੀ ਰੇਨਫਾਲ ਮੈਜ਼ਰਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਇੰਸ ਹੈਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੌਸਮ ਪੈਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਥਡ ਆਫ ਕਲਾਈਮੇਟ ਸਾਇੰਸ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਸੇ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਨੌਲੇਜ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਇੰਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ इस साइंस में एक्चुअली जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट साडे बेस शुरू होया बेसिकली वो बहुत पहले होना शुरू होया जब क्रिस्टल साडे बेस ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, और ਇਹਦਾ ਜੀ ਲੋਡ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪਈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਕਲੋਨ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਵੈਟਰੀ ਬੇਸ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀਗੇ। ਸਨ 1861 ਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਾਈਕਲੋਨ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਸਾਈਕਲੋਨ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋਇਆ। तो सबसीक्वेंट सालों में जो 1864 के 1871 ਵਿੱਚ ਮੌਨਸੂਨ ਲਗਾਤਾਰ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਡਾਊਨ ਲਾਈਨਸ ਨੇ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਵੈਂਟ ਜਦੋਂ ਹੋਏ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਸ ਹੋਈਆਂ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਉਸ ਟਾਈਮ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਇਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਟੂ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ए डिपार्टमेंट कंटिन्यूइंग और मेट्रोलॉजिकल सर्विस करने सर। फिर ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ 1875 ਚ ਇੰਡੀਆ ਮੈਟਰੋਲॉजिकल डिपार्टमेंट ਦਾ एस्टेब्लिशमेंट ਹੋਇਆ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਐਚਐਫ ਬ੍ਰੈਡਫੋਰਡ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਟਰੋਲॉजिकल ਰਿਪੋਰਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਅਪਾਇੰਟ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਫਰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 1890 ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਜੌਰਜ ਇਲਟ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ इट्स ਉਹ ਫਸਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਮਿਲਟਰੀ ਬਣੇ, ਔਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਟਰੋਲॉजिकल डिपार्टमेंट ਦਾ ਹੈਡਕੁਆਰਟਰ ਸੀਗਾ ਕੋਲਕਾਤਾ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਸੀਗਾ ਮੈਟਰੋਲॉजिकल ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦਾ, ਮੈਟਰੋਲॉजिकल ਸਾਇੰਸ ਦਾ, ਉਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ।
बहुत पहला शुरू होया और जेडे कुछ फैक्ट सी जिहदे करके लगे कि ये बहुत जरूरी है डिपार्टमेंट नो डिस्कस करना और 1875 फिर इंडियन यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट बढ़िया साडे और एक बड़ी इंटरेस्टिंग जर्नी है यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट की 1875 च एक डिपार्टमेंट बढ़िया 140 साल पुराना डिपार्टमेंट है और जो पहला हेडक्वार्टर सीगा कोलकाता सीगा साडा उस तो बाद फिर 1905 ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨੇ ਸਿਮਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਲੀ ਲਾਈਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਿੰਗ ਇਕੋਨੋਮਿਕਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਇਨ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਜਰਨੀ 1928 ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ 1925 ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਅਸੀਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਥਿਤ ਹੋ ਗਿਆ 1928 ਵਿੱਚ it has shifted to this ivory Pune ਜਿਹੜਾ Pune सेंटर है ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ और Pune ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ Pune ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜਾਓ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਲਾ ਆਫਿਸ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਜਾਓਗੇ ਜਾਣਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਪੂਲਰ ਨਾਮ ਹੈ ਸਿਮਲਾ ਆਫਿਸ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਹੈਡਕੁਆਰਟਰ ਸਾਡਾ ਕਲਕੱਤੇ ਸੀਗਾ ਫਿਰ ਸਿਮਲਾ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਸਿਮਲਾ ਤੋਂ Pune ਗਿਆ और फाइनली जो है 1935 में दिल्ली हो चला साडा हेडक्वार्टर सो द जर्नी ऑफ दिस डिपार्टमेंट स्टार्टेड फ्रॉम कलकत्ता इन 1889 then it was shifted to Simla finally then to Pune and finally 1995 to Delhi so now we are in Delhi so this is our headquarters in Delhi so this is the how we have actually come through various Satvik, I cannot hear her. Okay. Yeah, okay. I think I have just dropped a message to him.
the technical error. I'm trying to call him. Samantha, he's to connect through his mobile data. उनके इंस्टीट्यूट के वाईफाई में कुछ प्रॉब्लम हो गई है. Let us wait for. Yes, we let us wait for a couple of minutes. Sanidhya, I think he is now. Yeah, he is now, but his audio is not connected. Dr. Surendra, yeah, your audio is not connected. When you try to join Zoom meeting, I think आपको permission देनी पड़ेगी audio के लिए ना. Can you try joining using same link?
हेलो हाँ जी सर, आप actually some issues there in that thing, so I'm now from mobile, so I'll just PPT you will be able to see for right now. So is that okay? ठीक है, मैं just बोलूँगा. So I was talking about the services. 18 area of services which our department is providing: agriculture, water resource, environment, then disaster management. You know, they are the prime people. Sport, railway, aviation is our core area, and now we are venturing into new areas like defense, and so our department is many providing very crucial services to the nation. Then next is actually how we have grown. ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪੋਪੂਲਰ ਸੀਗਾ ਛੱਡਦੇ ਸੀਗੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰਨੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕਰੀਏ। ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ 1905 ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਸਿਮਲਾ ਆਫਿਸ ਬਣਿਆ ਤਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੈਲੂਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਬੈਲੂਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ताकि सानू पता चले कि जो एटमोसफीयर की हवा की सकी है और स्पीड कितना है। वो तो क्योंकि एग्रीकल्चर बहुत पहला वेदर नाल जुड़िया होया, क्योंकि जो खेतीबाड़ी गेता सी एग्रीकल्चर शुरू कितना मौसम रहूगा अगले दो दिन और की उन्होंने करना चाहिए उनके बेस पे। वो तो बाद फिर ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਕੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਅਗੇ ਅਸੀਂ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਏਰੀਆ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਕਵਰ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਪਰਪਸ ਇਹ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜੇ ਫਲਾਇਰ ਹੈਗੇ ਉਹਨੂੰ ਰਾਈਟ ਫਰੋਮ ਦਿਸ ਪਲੇਸ ਟੂ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਵੈਦਰ ਰਹੂਗਾ ਪੂਰੇ ਰੂਟ ਦਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। 1954 ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਡਾਰ ਵੀ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੇ, ਵੈਦਰ ਰਡਾਰ। तो we started in 1954। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਕੀਤੀ 1955 ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਪੋਜੀਸ਼ਨਲ ਐਸਟਰੋਨੋਮੀ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜਾ ਕਲਕੱਤੇ ਹੈਗਾ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਐਸਟਰੋਨੋਮੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਇਵੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕਿ ਸਨਸੈਟ, ਸਨਰਾਈਜ਼, ਦੈਨ ਇਕਲਿਪਸਿਸ ਐਂਡ ਆਲ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਡਿਟੇਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਔਰ ਪੂਰੀ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1957 ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਓਜ਼ੋਨ ਮੈਜ਼ਰਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ 1964 ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਸੈਟਲਾਈਟ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸੈਟਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸੀ US ਸੈਟਲਾਈਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸੈਟਲਾਈਟ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਿ ਹਾਊ ਵਟ ਆਰ ਦਾ ਇਮੇਜਰੀ, ਵਟ ਆਰ ਦਾ ਇਮੇਜ ਆਫ ਦ ਕਲਾਉਡਸ ਐਂਡ ਆਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ 1964 ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਕਰਦੇ ਗਏ। 1982 ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਕਾਸਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੈਦਰ ਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟਸ ਤੇ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਸਾਡੇ ਅਬਜ਼ਰਵਰ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਬੈਲੂਨ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸਟਰਕਚਰ ਅਪਰ ਏਅਰ ਚ ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਟਰੋਲੋਜੀਕਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੈਪ ਤੇ ਪਲਾਟ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੋ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈਗਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਾਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈਗਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈਗੀ ਔਰ ਬੜਾ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਸਿਨੈਪਟਿਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਐਵਰੀ ਈਅਰ ਆਬਜ਼ਰਵਿੰਗ ਇਨ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਪੁਆਇੰਟਸ ਇਨ ਦ ਕੰਟਰੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਸੀਗੇ ਅਗਲੇ 2 ਤੇ 3 ਦਿਨ ਤੱਕ ਕੀ ਮੌਸਮ ਰਹੂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਸੀਗਾ ਬਹੁਤ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ 1982 ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ
एटमोसफेयर ਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਔਰ ਮਾਡਲ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਵੈਦਰ ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ, ਜਿਹੜਾ ਬੜੀ ਪ੍ਰੀਲਿਮਿਨਰੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਹਦਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦੇਖਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਜਿਹੜਾ ਰੀਜਨ ਹੈਗਾ ਆ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਔਰ ਅਗਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 4-5 ਦਿਨ ਕੋਈ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਵਿਦ ਰੈਫਰੈਂਸ ਟੂ ਰੋਟੇਸ਼ਨਲ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਡਲ ਸਾਡਾ ਵੈਦਰ ਫੋਰਕਾਸਟਿੰਗ ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਸੇ ਬੇਸ ਤੇ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਗਏ ਆਪਣੀ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨਸ, ਸੈਟਲਾਈਟ ਸਿਸਟਮ, ਰਡਾਰ ਸਿਸਟਮ। और ਜਿਹੜਾ 2008 ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 2007 ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਜਿਹੜਾ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਸੈਪਰੇਟ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਅਰਥ ਸਾਇੰਸਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਬਣੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੌਸਮ ਦਾ ਬਹੁਤ हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सिस्टम ਅਸੀਂ इंस्टॉल किए और इस टाइम पे प्रोड्यूस ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਟ੍ਰੋਪਿਕਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਫਾਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ। 20th ਦਾ if you taking the certificates worldwide और फिर ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਕੀਤੀ ਔਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਐਂਟਾਇਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਕਨਵੈਂਸ਼ਨਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੇਸ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ और ਉਹਦੇ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪਾਰਟਸ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੀ ਔਰ ਗਲੋਬਲੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਲੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਜ਼ਰੀਏ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਡਵਾਂਸਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਐਡਵਾਂਸ चलो भाई गाइस पोस्टर स्टैंड लेकर आई स्मॉल सा दुश्मन कितने अच्छा बुलेट के फॉर्म में ओके आ लेके आए लड़की कर दी ओ करना इंटरव्यू स्टार्ट ठीक है
लाइव स्ट्रीम चल रहा है, वॉल्यूम ओ भैया एक मिनट स्टॉप कर लो यहाँ पे। वॉइस चाहिए, वॉइस ही नहीं जाएगी इसमें, फिर रिकॉर्डिंग बंद है तो लाइव में भी कौन सी ऑडियो जाएगी? ठीक है कोई बात नहीं।
लटा लो इसको, इधर को लटा लो ना, बस बस ऐसे ले जाओ ऐसे। इधर लगा दो नहीं दीवार के नाल।
लाइव खुशवंत, सात्विक, समरीत, आजो पोस्टर स्टैंड आ गया। नहीं कुछ नहीं होता है, कुड़ियां कर लेंगे काम। ओए ऑडियो बंद कर रहन दे सनिथे खुशवंत अंशुमन किथे क्या